Stunning shots. Shot one smashed into the boundary. Unplayable deliveries. Brilliant deliveries. And unbelievable catches. Oh, yes. But in September, witnessed history unfold in Tasmabad with the champions of One Day Cup. Best of the best battled it out in an unforgettable display. Skill, heart, and resilience in the 50-over format. One to be crowned the ultimate champion. Well, that's big. And that is the tournament. That is the trophy. It's time for the action to return to the format more exciting, more thrilling, more electrifying. Time for the Champions T20 Cup in Rawalpindi. 5 fantastic teams, each led by a fearless captain, mentored by Pakistan's cricketing legends. UMT Markhors locked horns with the Nurpur Lions in the curtain raiser. Winners of the Champions One Day Cup, Lake City Panthers, take on the ABL Stallions in the game later in the day. Kicks off what promises to be a spectacular month, full of extra-booty action. Trophy is within reach. The stakes have never been higher. Let the high-octane battles begin. A very warm welcome to Rawalpindi. It's time for Bahria Town Champions T20 Match 1. Nurpur Lions taking on UMT Markhors. What exciting cricket ground. Let's hear it out from Salman Butt. Welcome to Rawalpindi Cricket Stadium. It's bright, it's cool, it's sunny. The temperature here is 11 degrees and the humidity is 48%. And we have a game on our hands which will be played by the UMT Markhors and the Nurpur Lions. And the pitch here looks as good as the day. It's brilliant. If you see the pitch get close down to it, looks a belter. But it's December, and in this time of year, captains usually prefer to bowl first. But the pitch tells a different story. Either way, they can go by the strength of their side. But the pitch looks wonderful cricket pitch. wonderful cricket pitch. That's what you expect from Rawalpindi, and this is what Salman Butt thought. Yeah, there have been plenty of run scoring in Rawalpindi, especially the match which was played between England and Pakistan a couple of years back. The records were broken, but this looks like quite a different story. There should be something for everyone. There have been cracks, and we can expect the best of the lot in terms of the bounce, which we have been seeing in different grounds across the country. You will see a lot of pace on the offer, which will allow the batsmen to open their scoring opportunities, courtesy some shorter boundaries. Let's go to toss. Shah Faisal was out there with both the captains.
It's match 1 of Barrier Town Champions Cup T20 tournament. It's toss time here. I've got both the skippers, Imam ul Haq, Nurpur Lions, and UMT Markhors, Iftikhar Ahmed, Nadeem Ashraf, the match referee. Imam has got the coin. Give it a flip, Imam. Head. Heads is the call. Heads it is. UMT Markhors. Iftikhar, आप टॉस जीत गए, क्या करेंगे? बॉलिंग करेंगे. टूर्नामेंट का पहला मैच है, विकेट आपने देखी, दिसंबर का महीना है, क्या रीड कर रहे हैं कंडीशंस को? सेम वही प्लान है क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर लग रहा है विकेट में और कोशिश करते हैं कि इससे फ़ायदा ले लें. और टूर्नामेंट के लिए टीम इकट्ठी हुई है, कैसा माहौल है कैंप का, कैसे देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल रहा और मिसबा भाई सबके साथ बड़ा काम कर रहा है. कोचेस की तरफ से बड़ा वो मोटिवेशन मिल रही है सब प्लेयर को. और क्या टारगेट आप देखते हैं कि इस कंडीशंस को देखते हुए? टारगेट तो हमारे जहन में नहीं है, जितना भी करे तो इंशाल्लाह हम चेस के लिए जाएंगे. ठीक है, चलें. ऑल द बेस्ट इफ्तिखार, हैव अ गुड गेम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. इमाम, आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? टॉस जीता तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन जीता नहीं हूं तो अब मैं कैसे बताऊं आपको. कैसे रेट कर रहे हैं कंडीशंस को? बैटिंग देखें, जो विकेट की लुक लग रही है, इट लुक्स अ वेरी गुड विकेट, बट ऑब्वियसली के सबके जहन में ये ज़रूर है कि 11 बजे है, दिसंबर का महीना है, सो मे बी शायद बॉल पिंडी में जो है चिली वेदर है तो शायद हो. तो लेट्स सी, विल गो देयर एंड विल असेस द कंडीशंस एंड देन विल. और वही सवाल, टीम आपकी इकट्ठी हुई है, कुछ दिनों से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीम का माहौल कैसा है इस टूर्नामेंट को लेके? क्या देखें, जो फैसलाबाद में भी हमने खेला, हमारा बड़ा अच्छा माहौल था, हमने बहुत एंजॉय किया वो कैंपिंग. अनफॉर्चुनेटली वो बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ, बट हम पिछले 7-8 दिन से साथ हैं, हमने प्रैक्टिस मैचेस खेले, हम साथ इकट्ठे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे. इट्स अ ग्रेट थिंग, बहुत अच्छा कैंपिंग चल रही है, तो हम अच्छा सा कोशिश करेंगे कि स्टार्ट करें और फर्स्ट विन से जो है टूर्नामेंट को स्टार्ट करें. चलें, ऑल द बेस्ट फॉर द टूर्नामेंट, हैव अ गुड वन इमाम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. So the news from the center is that UMT Markhors have won the toss and they will bowl first. Win the toss and bowl first. Winter morning, although it's an 11 o'clock start, but still it played in the minds of both the skippers. I think Iftikhar with a huge sigh of relief when he won the toss, but we'll go Nurpur Lions first. Star-studded side up. Imam ul Haq, the skipper. Hassan Nawaz, Zishan Malik, prolific opener. Rohil Nazir from this part of the world. Awais Zafar, Muhammad Taha, Faisal Akram has made his international debut. Amir Yamin, Musa Khan has a resurgent season. Shahid Aziz and Muhammad Salman. Yes, UMT Markhors also got a perfect blend of youthful exuberance and master blaster in terms of the captain Iftikhar Ahmed. Fakhr Zaban is trying to make hay while the sun shines in terms of the domestic cricket. Khwaja Abdul Nafi. Well, we expect crowds to turn up. This is the feature of Rawalpindi Cricket Stadium. High-octane games does attract a lot of audiences in the stadium. Both the teams upbeat, talking to the skipper and watching their pre-game routines. They really looked high on intensity. This is an important competition in Pakistan's domestic structure. We saw the advent of the 50-over format in Faisalabad, and how electrifying was that, Akhil? You were there. And we expect to see even more because this is T20 format. The action doesn't even stop for a brief moment in this format, as we saw seeing the teams lining up for the national anthem. But yeah, that Faisalabad event was great, Akhil. Yes, here we are in the capital of the country, and we would like to have a lot more crowd over here. This is the T20 format, which is the favorite of most of the fans, and the kind of the action which unfolds in Rawalpindi Cricket Stadium has always been that you just extend the arm and get the ball. But now we are all set for the national anthem of Pakistan.
we should expect a lot of excitement in Rawalpindi for this T20 format for the next 2.5 weeks. There will be action, double headers, single games throughout the tournament. Only a couple of days where there would be gap in between. So we'll have to prepare for a lot of top quality cricket. All these players, they will be battles for day in, day out. Remember, this will be based on a double header format where every team will get a chance to play the other team for 2 times. And that will allow everything to unfold. If there's a blip in the first instance, they could make a comeback. If there is talent in your lot, you can showcase in this T20 format, and you got everything. Umpires are already in the middle. Imran Javed on your screen. And he will be joined by Zulfikar Jan, another very young and promising umpire. Well, Akil, the excitement is there. You can feel it in the national anthem play. You could feel that it's something very, very special about to happen. And these players will have a wonderful platform to showcase their skills. In the 50-over format, you said UMT Markhors in the hurdle. Abdul Samad made an immediate impact in that tournament in the first game, and he ended up playing for the Pakistan Shaheens. So that's the kind of rewards you're likely to get. PSL in the offing, the draft happening, and this is a big shopping window for all the scouts and the franchise ownership and their managements to have a look and see if they can find some exciting talent for the upcoming season. Zishan Malik and Imam ul Haq walking to the middle, both very, very good. A combination of left-hand, right-hand batters. Zishan, obviously from Rawalpindi, knows these conditions well. Imam is a seasoned campaigner, very, very experienced and prolific. Yeah, a lot of water has gone under the bridge since that ODI Cup which was played in Faisalabad. So in those 2 months, there have been a number of tournaments. First and foremost, the Qadi Azam Trophy, which was played in between the region. In this part of the country, especially in Rawalpindi, some of it was in Aptabad, then also in Faisalabad. And then they are just concluding the PCB inter-departmental and then the Inter-Club Cup, which is about going to be completed. The women cricket has been seeing a lot of heights, so we would like to see that this all talent is being transferred to this T20 format where all the eyes and ears would be on these players. Zishan Malik has been a seasoned campaigner, 40 matches and approaching 1,000 runs. You talk about average in the T20 cricket, this is a decent 127.61, already got 750s and a century under his belt. Zishan Malik at one stage was really pushing for a spot in the Pakistan side. He's fallen away a little bit. Imam ul Haq, average of 32, the strike rate of 123. It's a bit less by modern standards, especially the top of the order, but that average compensates for that. Very experienced, just 28 years of age. Sometimes you forget how long Imam ul Haq has been around for, but he's only 28. This man, Akif Javed, made waves in Faisalabad with his pace, with his aggression. Unfortunately suffered an injury. 48 games, 49 wickets. Economy is slightly on the higher side in this format, but good to see him back in action because, like I said, he was mighty impressive and will be looking to exploit that pace and bounce in Rawalpindi pitch with his height. Zulfikar Jan waiting for the clock to tick over. It has now. Play has been called, and let the action begin, says Zulfikar Jan. Plenty of movement, no control, and a heavy price. 5 wides to begin with. And the other thing which we'd like to see that how much bounce it is going to produce off the surface, and there would be some promising signs for the fast bowlers and also for the batters. There was that kind of a steep bounce which the ball gathered after going across the batsman. They're off the mark. Obviously, the left-arm fast bowler would not like to get it going in this fashion. It was the talk of the town in terms of the one-day cup in Faisalabad. It's a big shout. I heard a couple of noises. It'll be an interesting replay. Got it on target straight away after conceding that wide. Akif
Since his injury, he's played a couple of practice games, but this is big. What do you make of that, Akil? Did it pitch outside the line? Probably marginally. That's the big challenge for a left armer. If you want to get a leg before decision, you need to pitch it fuller and a bit straighter. Yeah, talking about Akif Javed, he's just played a couple of practice games, nothing competitive in terms of domestic cricket since that injury he sustained after the Faisalabad tournament. Good to see how his rehab has been and how he comes back, his fitness. But after that initial loosener, he's been bang on target. Yeah, just one game for him since the tournament, and the flip side of it, Zishad Malik has not been able to turn up for the longer format in the Qadi-Azam Trophy. Zulfikar Jan is there, the non-striker, and Imran Javed, another season campaign in terms of the umpiring duties. They're at the square leg position. Well, Zishan is known for being belligerent. It took him only a couple of balls to size up Akif Javed and attempt that big hit. Didn't really come off the middle of the bat. Yes, talking about mentors, it is not an easy job because not only you have to select the teams from a larger lot where the expectations are always high if you are going to perform in the tournaments like Qadi-Azam Trophy or the Inter-Club Cup, which are just being concluded. You would be eyeing that place in those teams which are now just one-stop solution towards qualification for the Pakistani team. So a lot of effort has been put in. These teams have been assembled since more than a week in Islamabad. Got it through. And will get to the boundary. This Pindi outfield is always very, very fast. You get full value for your strokes. Zishan off the mark with the boundary. Heaps of space offered to Zishan Malik. Cracking sound off the bat and played right into the gap. That will give him tons of confidence to start the innings and also go beyond a questionable longer format season where he was not able to turn up in the Qadi-Azam Trophy, but good start for him, courtesy a lot of it given by Akif. Change of angle immediately. Akif going around the wicket. Trying to crab Zishan, shouting big. Probably going down from that angle. It was pretty wide of the crease from Akif Javed. And the angle too much for Zulfikar to even consider. Yeah, UMT Markhors obviously will have to be sensible how they are going to use Akif Javed, especially after the injury, creating that angle. And because he was coming across and making a lot of movement off the surface after going around the wicket, and that was a questionable decision at all the times, but a couple of times he has raised doubt in the mind of the batsmen, so it will be crucial that how they are going to battle it out. Left-hander on strike, Imamul Haq. Two slips in place for Akif. Imam goes down the wicket, smashes him. That's a boundary. What a start from the Nurpur line skipper. He started with intent. First over done, an expensive one. Nurpur lines 14 for none. So Nisar is coming on to ball from the pavilion end. Nisar Khan. Nisar Ahmed rather, a tall fellow who will like to make use of his height off the surface, who would like to surprise the batter.
not too much of pace, especially if you are comparing him to Akif Javed. But he can create that angle which can cramp the batsman and make him struggle as far as the width is concerned. But good going for Nurpur Lions so far. Already they are in double figures, 14 for no loss, and especially the way Imam Haq used the crease and came down to play that shot, that was remarkable. On the very first ball of the tournament for him, the captain himself, looks like that he's there to make a statement. Nisar will get some extra bounce because of his height. Got a high arm action, not express, but a very consistent bowler. And you talk about that boundary of the last ball of the last over. Imam Haq showing his intentions clearly. I mean, very first delivery. Imam, who's generally known to be very circumspect. Look at that. Charges down the wicket. The good thing he does is give himself some room as well to free those arms through the offside. Zishan, on the other hand, has been in a tangle. Once again, falling over a little bit. Missing the line of the ball. But you're right, Akil, when he said Imam looked like he made the statement. Are we going to see a different Imam Haq in this format? He was slightly different in the toss. That was for sure when he was talking to you, and never expect that what he was going to do. That there is always that traditional question which you rightly asked, that what they were supposed to do if they were winning the toss. But never mind, the things are different and these are new days. Playing a miss, and that bounce that I was talking about from Nisar. Yeah, that was a very cheeky answer from Imam. Probably it was a good toss to lose for him, because sometimes coming to Pindi early doors, you look at the wicket and you think it's full of runs, but that moisture, early morning, dampness, not a lot of it for 11 o'clock start, but there is something. And in 20 overs, if you get it for 3 to 4 overs still, get the opposition to start sluggishly and put pressure on them, but it hasn't been the case. Nisar looking to make amends for Akif's over. Once again, a good delivery. Back of a length, jagging back in. And that bounce took it over the stumps. Yeah, you talked about jagging back, and the way he is coming onto ball, it looks like more of a jog rather than a run-up. But the way he released the ball and make it talk has been phenomenal. He has also coming on the back of a decent Quaid-e-Azam trophy. He has been among the wickets coming from the city of Lahore and going good so far, making full use of the variations in terms of the length. One out swing, couple of in swingers. Another play and a miss, another beauty. This one holding the line. He's mixing it up very nicely. Yeah, so far so good. Once again, it held its line, and then a lot of bounce on the offer. Zishan has been in two minds, not only in this over, but also in the previous one, where he was able to make the most use of it. But so far, it has been great. 5 dot balls. Let's see what it's going to do in the final one. It's in the air. Hasn't hit it cleanly. Oh, what a catch. What a brilliant catch. Fakhar Zaman, talk about his fitness. He's shown he is still as agile as ever. And first blood to UMT Markhors thanks to brilliant Fakhar Zaman. So that was a shot out of frustration by Zishan Malik. That was a great over. Not too much of width offered to play that shot. He played right in the air. And in the end, he had to take the long walk. He was looking promising in the first over, but perished against remarkable display against Nisar. 2 overs gone. Nurpur Lions are now 14 for 1.
The free-flowing batsman from Laya, Hassan Nawaz, replacing Zishan Malik at the end of over number 2. They are now 14 for 1. At the end of over number 1, they were 14 for none. So a stark contrast in terms of the 2 overs, courtesy a remarkable bowling display by the right-arm fast bowler. And in the end, Nisar had the last laugh. Zishan Malik is now back in the hut, and Imamul Haq will have to show a lot more sensibility in terms of the scoring opportunities which will be on the offer, and Akif will take a lot of heart from it. Look at Fakhr Zaman move though. He looks in good shape, and that's an important catch. Zishan can be very dangerous. He looked out of sorts though in his little innings. Fakhr Zaman not part of the Pakistan white ball teams. Nisar has bowled a wonderful over though, a maiden over, getting the ball to swing and move both ways. And Fakhr Zaman has done the rest. This is good. Now Akif needs to pull his socks. Back of a length. Well, this is a good contest brewing already between Imam and Akif. After a remarkable over by Nisar, now this is time for Akif to put up a show, and this would be a contrast in terms of the partnership between Imamul Haq and Hassan Nawaz. Imam, as we know, he'd like to bide his time, take it deep. Hassan Nawaz is a different kind of a batter. We have seen his show of brilliances in terms of the six-hitting ability, and when we talk about the T20 format, this should be always the name of the game. Another brilliant delivery and good running between the wickets, because the fielder was right on the spot, but good rotation of strike and a great call by Imam. Imam once again showing his intentions. He's moving away from his stumps, trying to create the room on that offside. This one, well bowled by Akif, cramped him, but look at how Imam went. As soon as he hit the ball, he called and put the head down. Sprinted along. Hassan Nawaz is also very young and energetic, very fit cricketer. Early days in his career. A lot of promise. It's a very good platform for him to deliver here. This is a good spell of bowling now. Last 9 deliveries haven't yielded any runs, and Lions have lost the 1 wicket as well. So this is a good comeback from UMT Markhors. You know, to talk about the different phases of the game in the T20 format, there is not of time left which you can take it easy and take it deep. You will have to continue with the scoring momentum. That has been one of the areas which the mentors would like to work, that you cannot take it easy. One good over, and since then there has been all quietness. Yes, the over by Nisar Ahmed was remarkable, but you need to find that where are the opportunities available, and that is kind of a little difference which we tend to see between the Pakistan team and the rest of the world, there where the scoring opportunities are not rightly pronounced or not rightly exploited, especially during the middle part of the innings. Fine leg is up in the ring for Akif. Rode the bounce nicely. That's boundary. Very fast outfield once again at Rawalpindi. And Hassan Nawaz showing his talent here. Really got nicely over the ball and just caressed it in the gap. You talk about creating the scoring opportunities, and this is Hassan Nawaz for you. Light on his feet. A tall fellow, rode on the bounce and played right into the gap, and in the end, the most remarkable aspect that it was a risk-free shot. The bat came downstairs, nothing airy-fairy about it, and earned himself a boundary. Good bounce, fast outfield. It makes for plenty of runs. Too much bounce on that occasion. Even Khaja Nafe couldn't get to it. A boundary, more extras on the scorecard of UMT Markhors. 3 done, 23 for 1.
Rawalpindi and Islamabad basking under the glorious sunshine of mid-December. Nothing smoggy or foggy about it. You could see those Margla mountains on the top of your screen, which is just right behind us. This is the brand new media center building, which was opened about 5 years back. And from the far end, it is going to be Nisar who will be continuing the change in the field. They are swapping their positions mid-on and mid-off. Imam ul Haq will have some doubts in his minds. And after seeing that bounce in the previous over, it will be interesting that how Nisar is going to exploit. It's the first time Imam is facing Nisar. Looking for a wide Imam, but he was backing away. You'll see when we do get to see the replay. He just backed away, tried to create that room outside the off stump. That's Imam's favorite strike or the attacking option. Look at that, moving right outside. Still pretty wide, but umpire obviously gave the benefit of the doubt to the bowler, Imran Javed. Probably won't get away with this. Yep, Imran Javed rightly calling it a wide. The line and angle of attack is different by Nisar in this over as compared to the previous one. He was cramping the ball, the batsman in the previous over, and now he's not allowing to freeze arms and keeping it as much away as possible, especially from the left-hander Imam. Remember, there is only 66-meter boundaries. If he could get the connection, there will be no stopping. Bowling round the wicket straight away. Nisar, and Imam is swinging at thin air in this over. Couple of dots and a wide. Fielder at third is back on the boundary, and you say it's 66-meter boundary, but the outfield is cut very short and it's very, very fast. You have to beat the infield and you get 4 invariably all the time, especially in the power play. Imam swing and a miss. Well, Imam got away with 1 boundary doing that, but he's had plenty of misses after that. 3 legal deliveries plus 1 wide, all in the same area, and all attempted by Imam to go big over the covers region, but not able to get hold of that one. He's lining it up all right, but it's that bounce that goes over his bat. It's a little bit of low hands. This is the bounce of Pindi pitch. And also not to forget, Nisar is so tall. Once again, a big grunt as he hits the deck very hard. Imam will be happy, I feel, to get off strike against Nisar. This has been a good over from Nisar once again. How impressive is that? Inside power play, he's bowled 10 deliveries just for 2 runs and 1 wicket. Yeah, and on the flip side of it, Hassan Nawaz, who likes to go big, not only on the over deliveries but also against the shorter one. We've already seen 1 attack against Akif, and now this is great contrast. Imam was cramped. He hardly tend to play 1 in the air, and almost an action replay which happened against Zishan Malik. He also played in the air into the hands of Fakhar Zaman. Got 1 slip for Hassan. Nisar will be bowling him for the first time. Hassan is very tall himself. He's able to get his hands above the bounce of the ball and get an easy single. Nisar immediately goes round the wicket to the left-hander, trying to crap him. He understands that Imam is looking to open up that offside. There is no protection in the deep in front of the wicket on the offside. It's a ring of 4 fielders. All of the fielders on the ring on the offside are staying at the edge of the circle. In the air, not a clean strike, falling short. Those fielders were back. Nawaz was hanging deep. 4 overs done. Nurpur lines 26 for 1.
अभी तक 4 ओवर्स का खेल हुआ है और खामोश रखा है नूरपुर लायंस के टॉप ऑर्डर बैटिंग को। आकिफ जावेद से ज़्यादा निसार अहमद ने, जिन्होंने बड़ी नपीतुली बॉलिंग की, 2 ओवर्स में सिर्फ 3 रन दिए। इमरान जूनियर अब ये पहली बार इस अटैक का हिस्सा बन रहे हैं और बाएं हाथ के पेसर की जगह बाएं हाथ के ही पेसर को आजमाया जा रहा है, जो कि T20 क्रिकेट का जुज़े लाजिम बन चुके हैं। लेफ्ट आर्म सीमर सलमान भट्ट जी। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। और इमरान रिसेंटली पाकिस्तान के लिए इमर्जिंग का टूर भी किया है, एशिया कप खेले, वहाँ पे भी डिसेंट बॉलिंग की है इन्होंने और यहाँ पर फर्स्ट चेंज पे आए हैं। इसे फ्लिक किया, दूसरे रन के लिए वापस आना चाहिए। यहाँ खासी मोहलत मिल गई थी, अच्छी प्लेसमेंट हसन नवाज की जानिब से। दराज कद हैं हसन और काफ़ी टाइम मिलता है इन्हें शॉर्ट बॉल्स के ऊपर। दूसरे एंड पर अगर हम देखें तो इमाम ने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स को सीधी हिट मारने की कोशिश की है और यही वजह रही है कि वो कनेक्शन में नाकाम रहे हैं। पॉइंट ऊपर है, कवर ऊपर है, ज़्यादा मुनासिब तो यह होता कि उसको कवर पॉइंट के ऊपर से पेस को इस्तेमाल करते, लेकिन वो इशू को फोर्स करना चाह रहे हैं और इशू को यहाँ पर अच्छा फोर्स किया है। हसन नवाज ने दिलकश अंदाज में खेला, बॉलर के सर के एन ऊपर और गेंद सीटी बजाती चली गई। जी हाँ, यहाँ पर फ़र्क है, एक बैट्समैन जिसकी रीच, जिसके बाजू लंबे हैं, कद भी लंबा है, आप देखिए स्टैंड एंड डिलीवर अपनी पोजीशन से और हेड स्टिल था। और इनकी और इमाम की शॉट में ये फ़र्क है, वो कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सब कुछ आइज, हेड, एवरीथिंग इज मूविंग। यहाँ पर जो है बिल्कुल स्टिल है। पुल शॉट खेला, ये शॉट गेंद थी, झपट पड़े इस बार और एंगल के खिलाफ ये 4 रन पाए हसन नवाज। बड़ी तेजी के साथ स्कोर को अब 36 तक ले गए। जी हाँ, 1 डाउन आए हैं लेकिन ज़्यादा सेट लग रहे हैं पहले से मौजूद ओपनर की निस्बतन और शॉर्ट बॉल्स का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पिछला शॉट स्क्वायर लेग की तरफ था, वहाँ पे 2 रन बने, इस बार उसको बाहर पुल किया गैप के अंदर 4 रन के लिए। इमरान को जल्दी अपनी लेंथ में तब्दीली लाना होगी, खासे महंगे साबित हो रहे हैं अभी तक। चार फील्डर्स ऑन साइड में मौजूद हैं, इसलिए आप विकेट टू विकेट भी बॉलिंग कर सकते हैं। इमरान जूनियर, हसन नवाज ने उस खामोशी को तोड़ा है जो कि पहले 4 ओवर्स में देखने को मिल रही थी। इन्होंने दरअसल एक ऐलान सा कर दिया है अपनी आमद का। ये 10 गेंदें खेलने के बाद हसन नवाज, इनके टैलेंट से हम वाकिफ हैं। जी हाँ, बहुत ही धमाकेदार बारियां लेते हैं ये और डोमिनेट करते हैं ऑपोजिशन को। और अगर ये पिच पे रह गए कुछ ओवर्स तो खासा अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। और पीछे हटे और इसे उठाकर खेला इमामुल हक ने। ये शानदार हिटिंग, दूसरा चौका इमाम की जानिब से। इसी पर ये ओवर भी जाता रहा, 41 पर 1। दस रन पर इमामुल हक खेल रहे हैं, जबकि हसन नवाज ने अब तक 16 रन बनाए हैं। निसार अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे पवेलियन एंड से। वाइड गेंद ख्वाजा नाफे ने तकरीबन लेग स्लिप पर जाकर इससे जा लिया। अभी तक तो निसार के जो फिगर्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। 4 रन दिए हैं इस वाइड को मिलाकर और 1 विकेट हासिल किया है, लेकिन लेंथ शॉर्ट है। और हमने देखा कि हसन शॉर्ट लेंथ पे बहुत अच्छा खेलते हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो देखना होगा कि इनके लिए लेंथ बदलते हैं या हसन इनके स्टैट्स बदलते हैं। ये देखिए
इस बार इमाम खासे स्टिल थे और कनेक्शन बेहतरीन। और क्या ये गेंद बल्ले से लगी थी, ये सवाल पलट कर किया था निसार ने। और कई बार जो बॉलर और विकेट कीपर हैं ये अंपायर को बावर कराने के लिए कि वाइड है, नहीं दी जानी चाहिए, इसलिए भी करते हैं। ये पैड से लगती हुई गई थी। अभी तक कैसे लगे हैं विकेटों के पीछे आपको ख्वाजा मोहम्मद नाफे? अभी तक तो काफ़ी नीट कीपिंग की है इन्होंने और कंफर्टेबल लग रहे हैं इस पोजीशन के अंदर। उम्दा शॉट खेला, नीट शॉट खेला हसन नवाज ने और ये शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, बैटिंग का रिदम उनने पिच पर पहुंचते ही पा लिया है। देखिए हम अभी यही बात कर रहे थे कि इस बैटर के लिए लेंथ बदलनी होगी, नहीं तो ये बैटर इनके स्टैट्स बदल देगा। और फिर एक बार शॉर्ट लेंथ, और हसन क्योंकि दराज का है, रीच ज़्यादा है, उसको फ्रंट पे उन्होंने खेला है, मिड ऑन के ऊपर से छक्का मारा है। किस कदर वक्त है हसन नवाज के पास, अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं और एकदम एक स्टार्ट जो कि थोड़ा स्लो लग रहा था बेहतर लगना शुरू हो गया। फिटनेस के मसाइल से 2-4 रहे थे अभी 2 बरस पहले, और अब जगह बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन शहजाद ने कैच लिया कवर्स में। ये खासी तेज गई और ऑन साइड में इनको बाउंड्रीज मिल रही थी, ऑफ साइड में इस बार शॉट का इंतखाब कर बैठे लेकिन उतनी जगह मैसर नहीं आई। ये दिलचस्प होगा देखना कि क्या ये स्लोअर वन था, क्योंकि टाइम नहीं कर सके बॉल और बड़ा एक आसान कैच फील्डर के पास गया। ये देखिए शायद बैट के ऊपर वाले हिस्से में लगा है और लूपी कैच, बड़ा ही आसान, और पॉइंट फील्डर ने कोई गलती नहीं की। हसन नवाज एक अच्छी फ्लैश इनिंग खेलकर 22 रन बनाकर आउट और 48 पे 2। अभी तक पावर प्ले की 3 गेंदें बाकी हैं लेकिन मुश्किल ये है कि 2 विकेटें गिर गई हैं यहाँ पर नूरपुर लायंस की, इसलिए रोहेल नज़ीर को आना पड़ा। विकेट कीपर बल्लेबाज को जो कि अच्छा खेलते हैं, इसी इलाके इसी खित्ते से उनका ताल्लुक है, पोठोहार से। यहाँ अच्छी गेंदों को आपको रिस्पेक्ट देना लाजमी होता है फॉर्मेट से कते नज़र, और ख़ास तौर पर जब मुखालिफ बॉलर भी अच्छे रिदम में हो। जी हाँ बिल्कुल बजा फरमाया। और एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर इस तरह आउट हुए, अपने लिए रूम बनाया। इस बार ऑफ स्टंप की साइड पर गेंद को हिट मारना चाहते थे, फील्डर्स सारे रिंग में थे ऑफ साइड पर, लेकिन टाइम नहीं कर सके हसन, और नूरपुर लायंस को एक और नुकसान उठाना पड़ा। रोहेल नज़ीर भी इमर्जिंग एशिया कप में अच्छी फॉर्म में नजर आए और यहाँ पर रैम्प शॉट खेलने की कोशिश की, अपील, लेकिन अंपायर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ली उन्होंने इस अपील के अंदर, और लेग बाय का इशारा। कह सकते हैं कि ये पावर प्ले जो है ये बराबर ही रहा है दोनों टीम्स के लिए अभी तक। थोड़ा सा निसार पे लाना अब तक अच्छी बॉलिंग की है, ये भी पैड पर लगी लेकिन क्योंकि लाइन के बाहर आ गया था और गेंद ऊपर भी जा रही थी स्पिंडी के बाउंस की वजह से। ये निसार ये अभी कायदे आज़म ट्रॉफी खेलते हुए आए हैं, इसलिए इनका इंतखाब किया गया। हालांकि इनकी जो टाई थी वो नियाज़ खान के साथ थी इस टीम में जो रिजर्व में है, वो भी अच्छे ऑलराउंडर में,
लेकिन पहले ही मैच में इन्होंने अपनी सिलेक्शन को बिल्कुल सही साबित किया। तो कंडीशंस के एतबार से वो उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। ये तीसरी विकेट इनको मिल सकती थी और गेंद कप्तान के हाथों से निकल गई इफ्तिखार अहमद के। जी हाँ, बहुत ही आसान मौका था ये और शायद इसको बहुत ही आसान जाना इन्होंने और रिलैक्स हो गए और मौका गवा दिया। पावर प्ले ख़त्म और 51 पे 2 नूरपुर लायंस। चैंपियंस कप T20 का आगाज हुआ है आई रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और इसी शहर के एक सपूत अब एक्शन में होंगे। मोहम्मद नवाज जो पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेल चुके हैं, बाएं हाथ से ये स्पिन बॉलिंग करते हैं। 196 विकेटें हैं इनकी। ये चाहेंगे कि आज 200 विकेटों के संग मील है यहीं पर अबूर कर जाएं और इनकी टीम भी यही चाहेगी। 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं, नहीं चाहेंगे कि इस मैच में बड़े रन्स बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है और नवाज बहुत ही एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है। इस गेंद को चलता कर दिया। पहली गेंद पर ऑफलाइन थे मोहम्मद नवाज और यहाँ बाउंड्री का मौका मिला। रोहेल ने इनिंग्स का आगाज किया चौके से। जी हाँ, इससे आसान गेंद मिल नहीं सकता एक बैटर को इनिंग्स के आगाज में। ये देखिए डाउन द लेग कितने इत्मीनान के साथ उन्होंने बल्ला लगाया इसको और अगर ना लगता तो ये वाइड होती। रिवर्स स्वीप, ये फाइन चली गई। विकेट कीपर जो हैं इनको दोनों तरह के स्वीप शॉट खेलना पसंद होते हैं और कई बार ये स्वीप शॉट फास्ट बॉलर्स को भी खेल देते हैं विकेट कीपर। जी हाँ, और इफ्तिखार इस टाइम काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं फील्ड को सेट करते हैं। और ये देखिए वो चांस जो कि कप्तान इफ्तिखार के हाथों से निकला और इजी ले गए इसको। अमूमन तो काफ़ी सेफ हैंड्स हैं इनके, लेकिन इस मौके पे गवा बैठे ये बास गेंदें जो हैं ये आ रही हैं रुक के, जिस पर हसन नवाज आउट हुए थे और यहाँ पर भी ये लेग साइड में खेलते हुए ये लीडिंग एज ये तकरीबन आज चला था मोहम्मद नवाज की जानिब। इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई अभी तक, यही वजह है कि विकेटें गिरने के बावजूद इतने ज़्यादा रन्स बन गए हैं। ये बहुत महंगे साबित हो सकते हैं आगे चलकर फील्डिंग टीम के लिए। देखिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है यहाँ पर रन्स बेशुमार बनते हैं और शायद यहाँ पर जितने बड़े बड़े कारनामे T20 क्रिकेट में हुए हैं वो ज़्यादातर इसी ग्राउंड के अंदर हुए हैं। तो यहाँ पे रन्स तो बनते हैं, लेकिन आपकी बात भी बजा है कि बॉलिंग जो डिज़ायर टारगेट्स है उस पर नहीं हुई। जो चाह रहे होंगे टॉस जीतकर उस तरह की बॉलिंग नहीं हुई। थोड़ी फील्डिंग में भी लैप्सेस नज़र आए हैं। यहाँ आज हमें सुबह यहाँ पर बताया गया था कि पाकिस्तान में जो T20 की जो 7 बेहतरीन इनिंग्स हैं, मिड विकेट पर फील्डर हैं, इसे एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा, उसी पर खुश हैं इमामुल हक भी। पाकिस्तान में जो 7 ऑल टाइम T20 क्रिकेट में बेहतरीन इनिंग्स हैं उनमें से 6 इनिंग्स जो हैं वो रावलपिंडी में खेली गई हैं। कामरान अकमल सर फहरिस्त से 150 रन की इनिंग्स उनने खेली थी यहाँ पर लाहौर के लिए खेलते हुए 2017 में। सलमान भट्ट उनके साथ थे जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सब आप भी एक लंबी इनिंग खेलें क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। रन चुराना चाहते थे लेकिन उसका मौका मिल नहीं सका। यहाँ अच्छी फील्डिंग की निसार ने, वही एक्शन में है हर तरफ। 59 पर 2।
पहले 6 ओवर्स का आप अहवाल देख सकते हैं, जिसमें वो बेबाकियां, वो T20 क्रिकेट की जो शौकियां हैं वो हमें नजर आई। अब इन झलकियों में बरमला उम्दा बैटिंग हसन नवाज ने की, 13 गेंद में 22 रन उनने बनाए। लेग साइड में वो अच्छे पुल शॉट खेलते हुए नजर आए। फिर ऑफ साइड में खेलने के लिए गए, इन कदरे रुकी ऑफ द विकेट शहजाद ने कैच आ लिया। ये इमामुल हक को एक नई जिंदगी मिली थी तो उनके ऑपोजिट नंबर के हाथों। जी हाँ, नूरपुर लायंस को ये बड़ा शॉट है और पॉइंट पे एक फील्डर के लिए मौका, और इस बार मौका नहीं गवाया उन्होंने। जाना होगा इमरान ने कैच लिया और इमाम को जाना होगा। 13 रन्स पे इनिंग्स का इख्तिताम हुआ है। तीसरी विकेट यहाँ पर गिरी है और थोड़ा कह लीजिए कि एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे पार्टनरशिप चाह रही होगी ये टीम, लेकिन वहाँ पर कप्तान को गवाया इन्होंने। ये बिल्कुल परफेक्ट डिलीवर किया बॉल को, हाफ एंड हाफ फुट आगे और पीछे लाइन के। आसान कैच। इमाम 13 रन्स बनाकर आउट हुए और नूरपुर लायंस तीसरी विकेट गवाई उन्होंने 59 के स्कोर पे। मोहम्मद ताहा एक बाएं हाथ के बल्लेबाज गए हैं, दूसरे आए हैं, तो बहुत ज़रूरी है T20 क्रिकेट में कि आपका जो राइट लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है वो विकेट पर रहे, ताकि दर्द सर पार्टनरशिप बनी रहे बॉलिंग करने वाले कप्तान के लिए। सर्वर ने अपनी पहली गेंद पर विकेट हासिल की, बल्कि यूं कहना चाहिए उनको विकेट मिल गई, जो कि T20 में अक्सर मिलती हैं विकेटें हासिल करने से ज़्यादा बॉलर को। देखिए, इमाम को मौका मिला था लेकिन उसको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और इस बार फिर रूम बनाया। बॉल से दूर निकल रहे थे और यही वजह है कि शॉट में जान नहीं थी, उसको टाइम नहीं कर सके, निकले हैं लेग साइड की तरफ और सर्वर ने, जो कि अपना पहला बॉल था, ऑफ स्टंप से बाहर किया। रन्स मिलेंगे, खुला मैदान मिल गया था मोहम्मद ताहा को। दिलकश स्ट्रोक्स लेफ्ट हैंडर ने खेला और उनने 2 रन बनाए। सलमान बट, क्योंकि आप शुरू से ही ओपनर रहे हैं, ओपनर्स को जो पहला सबक दिया जाता था कि आपने मिड ऑफ से फाइनल लेग तक खेलना है, लेकिन अब जाहिर है हाँ, दिन बदल गए, फॉर्मेट बदल गए। इमामुल हक जो हैं एक्स्ट्रा कवर खेलने चले गए। अगर हम दोबारा एक दफ़ा इमाम के डिसमिसल को देखें तो जब उन्होंने चार्ज किया बॉल की तरफ तो वो बॉल से दूर किया उन्होंने अपने आप को, और पहला बॉल है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बॉलर की लाइन क्या होगी। अभी आपकी स्क्रीन्स पे अगर दोबारा हम देखें इमाम के आउट होने का मंजर, तो बॉल की लाइन की तरफ जाना चाहिए आपको, लेकिन शायद वो रूम बनाने के लिए कुछ ज़्यादा ही दूर निकल गए। ये अच्छा टाइम किया और करीबी मामला हो सकता था, स्टंप्स को मिस किया पॉइंट फील्डर ने। अर्जेंसी दिखाई दे रही है रनिंग के अंदर। नूरपुर लायंस के लिए एक पार्टनरशिप का लगना बहुत ज़रूरी है। इमाम को अभी जब डिस्कस कर रहे थे हम, अगर हमारे पास दोबारा उनका रिप्ले चल जाए तो हम उसमें बेहतर बता सकते हैं। ये देखिए, इमाम जब क्रीज से निकले तो लेग स्टंप से बाहर हैं और गेंद ऑफ स्टंप से बाहर है, तो अगर अपनी जगह पर भी रहते तो खासा रूम था इस शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए। यही प्रॉब्लम है प्री प्लान स्ट्रोक्स के साथ।
इंतहाई बहुत ज़्यादा वो जो है हरकत में रहे बैटिंग क्रीज पर। इमामुल हक बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने में आई। 8 ओवर से बाद 62 पर 3। Lovely late morning in Rawalpindi. This is Saturday, and we expect a lot of youngsters to join us in this historical Rawalpindi Cricket Stadium, where the people have already started to come in. On our left side, we could see a big number which has been coming up. Remember, it is a day of double headers. Saturday would be a super Saturday in Rawalpindi, and a new partnership in progress. Young Taha and Rohel Azir now going through the proceedings. Good opportunity for both of them. Taha has had the flavor of PSL, although he mostly played via the emerging player category, not given roles that would suit his game, but he did feature in the playing 11 quite a few times. And Rohel Nazir has been around for some time now. Good opportunity for him as well to let everyone know where he is these days. Goes big. Take that. The switch hit. And I think it's gone all the way. Not quite. Umpire has given it a boundary. But good intent, good innovation from Rohel Nazir. Rohel had all the time in the world to play that shot, waited for it to be delivered and came right underneath it. And especially the remarkable aspect in that shot was that he had chosen the vacant area. If even that was a false shot, that would have landed in no man's land. A remarkable hit by Rohel Nazir. He's now in double figures, and a good partnership in progress courtesy these shots. They lost wicket number 2 and 3 in a flurry. Give Nawaz something to think about. No protection behind square on the offside. Call is for 2. It's right in the middle of the gap. Brilliantly placed. Wonderful piece of running as well. These two are very quick young cricketers. And this is good cricket from Rohel Nazir. Abdul Samad charged in from a shorter boundary. But that was a great call between Rohel Nazir, especially by himself and with his partner, Taha, which allowed him to come back. Short and wide, running hard once again to the left of the fielder, but good ground coverage. Well, the runs are starting to flow, but those couple of wickets that fell in the middle had really pushed Nurpur lines back. Imam, who got off to a start, couldn't convert. Neither did Hassan Nawaz, who actually looked more in control and more in form. But they're gone now. Goes up and over, shouts of catch it. Fakhar Zaman coming around. God. Wow, what an effort. Gets 2 hands to it. It's Abdul Samad. Fakhar was coming from long off. Samad from long on. And the ball popped out of his hands when he hit the ground. He did the most part of the job. Abdul Samad ran about 15 yards towards his left-hand side, covered the ground, came underneath it. It was not going to be easy. It is quite difficult to spot the ball with the background and the backdrop of this glorious sunshine in Rawalpindi. We did everything, just could not close his hands. Otherwise, we would have the remarkable and one of the top catches of the tournament. Once again, a reverse shot, just straight to the fielder. An eventful over coming to an end. 9 gone, 73 for 3 Nurpur lines.
current rate. Nurpur Lions are going to get to 162. 10 and over will get them to 183. Once again, shouts a catch it, falling short of Nawaz. Taha living dangerously. But I think one thing you can ascertain from today's play from Nurpur Lions, they're going to play in one gear. Is that the instructions, or is that the brand of cricket they want to play? Because they've been relentless in terms of their attacking intent. Yeah, he was in motion while playing that shot. The head was not still. And once again, on back-to-back deliveries, the previous one was a definite chance. This one also played in the air, so they must take it easy for the next couple of overs or so. He could not offer a lot of pace server, and that would not allow the batsman to play those shots with the cross bat towards the square part of the boundary. So either it is a spinner, they were doing well against Nawaz, or it is going to be Akif Javed, who will be coming back sooner rather than later to purchase a wicket. Or maybe against Nisar Ahmed, they could negotiate in terms of finding some scoring opportunities. But against Server, it is not going to be easy. Cramping him once again for room. Like I said, it's almost a shorter ball from these Nurpur Lions batters. And it seems pretty clear that that is their ploy. Leg by added to the total. Just saw that projected score just a while ago. 8.11, 8.14 the current run rate. Rawalpindi Cricket Stadium is the highest scoring venues, Rawalpindi. The projected scores at 8.14 will get them to around 163. Another solid thump. Yeah, talking about the highest scoring venues, Rawalpindi Cricket Stadium is at the top because this is the highest scoring venue in Pakistan. Iqbal Stadium, Faisalabad, 8.21. Same run rate, although a smaller sample size for Iqbal Stadium, Faisalabad. Plenty of cricket has been played in Rawalpindi. A total of 198 matches compared to only 46 of Iqbal Stadium, Faisalabad. More innovation. Chance. Taha got in. No overthrows though. Back up. Yeah, this yellow outfit of Nurpur Lions reminds us of Peshawar Zalmi, who have been one of the teams which have been playing phenomenally well in this Rawalpindi Cricket Stadium in the PSL. Once again, playing reverse. Kohel Nazir is making his intentions clear, but this time could not get the hold of that one. So Peshawar Zalmi, Islamabad United, and at times Quetta Gladiators have been the high-scoring teams on this particular ground in the Pakistan Super League. Once again played in the air, and this time he completed the catch. Nawaz is the fielder, covered more than 10 yards. That was an abrupt ending, but he grabbed the ball and never let it go. Taha has been struggling with his attempts for big shots, but he continued to try. Sarwar Afridi, no trouble here, but have a look at that. Just hit him slightly high on the bat, and Taha knew as soon as he made the contact, but still work to do for Nawaz, and he's done it brilliantly. Tumbling take to send away Mohammad Taha for 9. Nurpur Lions 78 for 4. And it's time for drinks here at the Pindi Stadium.
UMT Markhors, Nurpur Lions on the attack mode consistently. Batters taking chances. Look at this package full of action. Starting off with that wonderful take from Fakhar Zaman. Hassan Nawaz. Imamul Haq was throughout his innings looking to open up that offside and go for big strokes in that direction. Taha, who had a drop chance earlier, kept going, kept trying his luck. Ran out when Nawaz got hold of him. 78 for 4. One ball shy of the halfway stage. 2 wickets for Nisar. He was mighty impressive. Akif Javed making a comeback after injury. Server with his military medium. 2 wickets for him. Awais is the new man in. First ball that goes down the pitch at Server. Will get just a single. 10 done, 79 for 4. Among the runs, playing 13 runs of 12 deliveries, but since then there has been some downfall, and now courtesy that they would like to make use of the opportunity. Saad Masood, the youngster right arm off break bowler, is coming on to ball, offering some flight to the batter, but played all along the carpet. So a youngster to youngsters, and this is what Discovering Champions is all about, the Bahria Town Champions Cup in the T20 format. We've got some memorable nights in Faisalabad, and now we are expecting a lot of action where the talking point would be that how quickly you are able to change the gears. Most of these players are coming back from the longest format of the season, the Qaid Azam Trophy, where they played day in and day out with not too much of a gap between the games. So one ask would be that how quickly they are able to change their gears. Oh, that was a lapse on part of Imran, and a boundary given away. A gift indeed for Awais Zafar. That is sloppy. Imran, the left arm quick. That was a regulation stop. You cannot expect to do that at this level. That is very clumsy. Misbah would not be happy with that. Bowling. Ball side. Saad Masood, the young leg spinner. Well, it's exciting to see young leg spinners, to see how they go. Saad has just played one game for Lahore Qalandars. He bowls from over the top, which means that probably he won't have a big leg spinner. It probably would. Watch out for his googly. This is in the air and taken. It's once again Nawaz. He's been busy in the field. He's judged that brilliantly. And Rohail Nazir, who got away with one boundary with a switch hit, perishes attempting another one. First wicket in T20 cricket for young Saad. That was the fourth reverse shot being tested by Rohail Nazir, and was never in position to play that shot. The lack of spin in the end proved to be detrimental for Rohail Nazir. Half of them are back. Rohail Nazir now gone. 16 was his score. Now they are 86 for 5.
86 for 5. It's a very clear plan, it looks like it, from Nurpur Lions. They are all attack mode. They're not holding back, and they're not perturbed by the loss of wicket. Each one of them have started to come in and try to blast the bowling. Amir Yamin is very prolific at this level. Very good all-rounder. Sarwar Afridi, 2 for 8. Look at those bowling figures, Akhil. I got a question for you. Do you remember where you're waking up in Atlanta, in Dubai, Sharjah, or Islamabad this time? Let's talk about the wicket first. Yeah, that switch hit didn't come off on that occasion. When you encourage this kind of innovations, you just cannot hold this against Rohail for getting out on that occasion. To bring about that cultural change that you talk about in batting, and if you want to encourage your batters to keep playing those strokes, you cannot just hold one mistake against them. And it's very obvious that Rohail has brought this aspect into his game, although he needs to, you feel that probably he needs to work more on it to get more consistency out of that option. I'll come back to your question. Inside edge, there's a big shout. Khwaja Nafe took the catch and ran all the way to the stumps, appealing. Imran Javed remained quiet, and he reckons it went off the pad. And there was a sound, nonetheless, a brilliant delivery which cut him almost in half. And if it was hitting the pad, there would be question of another appeal, but the bounce proved to be tricky once again. And great bowling once again by Sarwar, and good to see by Imran Javed. Wide of the crease, off the edge of the bat. Sarwar spinning a web with an innocuous looking bowling of his. Back to your question, I do remember where I wake up, but at times I don't remember if it's AM or PM. So Pakistan had a remarkable run in the ACC Under-19 T20 Cup. There was a bit of an anti-climax in the last game. Amir Yamin has just joined young Awais Zafar. A lot of experience for Amir Yamin. So what do you make of the Pakistani team and the performance in the Cup and the overall talent which has been coming up through Afghanistan and Bangladesh and these countries, which is looking quite exciting and talented, especially from the second layer of the countries which are a part of the ACC? Well, the talent was phenomenal from Pakistan. You talk about Pakistan, India, of course, Bangladesh, who beat Pakistan. Some good fast bowlers and the skipper who played the match-winning innings. Call is for 2, but I don't think they're going to come back. Azizul Hakim Tamim looked a class apart. So the talent is plenty. Pakistan, in a layman's language, they did their job. They beat India. So it doesn't matter if they lose semi-final or not. But yeah, Pakistan's group of players, mighty talented. There's some very exciting talent. They will just need the support of the system to take them through those pathways and then make them into finished products. 12 gone. Nurpur Lions, 89 for 5. शाबाश आदा come on साथ तमाशाइयों की आमद है। रावलपिंडी स्टेडियम हमेशा से जाना जाता है क्रिकेट की सपोर्ट के लिए। ये पाकिस्तान का सबसे मकबूल सेंटर बन के उभरा है पिछले कुछ बरसों में, और ख़ास तौर पर इस सीज़न में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट यहीं पर हुई है। 3 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, 2 बांग्लादेश के खिलाफ और उसके बाद इंग्लैंड,
के खिलाफ इसी मैदान ने पाकिस्तान क्रिकेट को वो खूबसूरत पल दिया था जिसकी बड़ी ज़रूरत थी शिद्दत से, और इस चौके की भी ज़रूरत थी शिद्दत से। आमिर यामीन ने अच्छा हाथ दिखाया, कवर ड्राइव किया उन्होंने, विद द स्पिन खेलने में कामयाब हुए। अच्छी बॉल, अच्छी बॉल। मुतवातिर 2 विकेटें गिरने से 8 रन के इजाफे में जो रन्स बनाने की रफ्तार है वो मुतासिर हुई थी, लेकिन आमिर यामीन ये आजमुदाकार क्रिकेटर्स हैं, इनसे उम्मीद की जा सकती है। वैसे उनके साथ ये नए इस सीज़न में फैसलाबाद से खेले हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी रन्स बनाकर आए हैं, तो वो पार्टनरशिप जिसकी ज़रूरत है नूरपुर लायंस की, वो दोनों में करने की अहलियत है। सलमान भट्ट कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर वापस आए, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, और अच्छा मौका है वैस के लिए। पहले ही मैच में ऐसी सिचुएशन है कि अगर यहाँ से अपनी टीम को निकालने में कामयाब होते हैं तो बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। ये अच्छी गेंद, साथ ने अभी तक हर दूसरा बॉल गुगली किया है जब से बॉलिंग कर रहे हैं, और गुगली पे ज़्यादा बेहतर कंट्रोल इनका लगा है। जी हाँ, और इनका जो बॉलिंग एक्शन है वो भी ऐसा है, शादाब खान जैसा। बिल्कुल, जिसमें जो गुगली है वो ज़्यादा मौसर हो सकती है। स्वीप शॉट पर खासी तवज्जो सर्व की है नूरपुर लायंस ने। 13वां ओवर मुकम्मल हुआ, 96 पर 5। ये 5 विकेटें गिरी हैं। निसार ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, अच्छा स्पेल किया था उन्हें नई गेंद पर। आकिफ जावेद को अब लाया गया है पवेलियन एंड से। इन्होंने मीडिया सेंटर एंड से अपने पहले 2 ओवर्स किए थे, लेकिन खासे महंगे रहे थे, और उस वक्त जल्दी पहले ही ओवर में ये अराउंड द विकेट आ गए थे। हालांकि इनको मूवमेंट मिल रही थी ओवर द विकेट, लेकिन शायद कप्तान की ख्वाहिश ऐसी थी कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो जाहिर है उनकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी विकेट्स ली जाए। और कई बार जब आप ट्राई करते हैं डिफरेंट चीज़ें, ये अच्छा गेंद, अच्छा बाउंस, अच्छा कैरी, और अच्छा कलेक्ट किया, लेकिन अंपायर का फैसला वाइड बॉल, जो कि यकीनन था। ये सितम है फास्ट बॉलर पे। ये देखिए जो विकेट्स अभी तक गिरी हैं, पहला शॉट ज़बरदस्ती की और एक अच्छा कैच फखर जमान का, दूसरा फिर शॉर्ट बॉल को ऑफ साइड के ऊपर से मारना चाहते थे हसन नवाज। इमामुल हक का एक बार फिर बाहर निकल के और ऑफ स्टंप के ऊपर से मारना चाहते थे कवर की तरफ, और ये ताहा ने 3-4 दफ़ा बड़ी हिट लगाने की कोशिश की और नाकाम रहे, और एक मौका इससे पहले भी ताहा को मिला, लेकिन उस चांस का फ़ायदा नहीं उठा सके। और ये रोहेल नज़ीर, जब आपको पता है कि 4 विकेट गिर चुके हैं और आप सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं और 10 ओवर्स पड़े हैं, तो फिर आप थोड़ी सी क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स पे थोड़ी देर के लिए अगर रिलाय कर लेते और पार्टनरशिप बिल्ड करते, तो शायद नूरपुर लायंस के लिए ये बेहतर होता। जी हाँ, क्योंकि आप हर वक्त जो है वो फॉर्मेट के लिए नहीं खेल सकते, आपको सूरत हाल को भी खेलना होता है, और उसका लिहाज नहीं किया रोहेल नज़ीर ने कतई तौर पर। यहाँ ये वाइड हो जाएगी, 1 रन का और इजाफा। अभी भी ज़्यादा बुरी हालत नहीं है रन्स के एतबार से, क्योंकि 14वें ओवर तक भी अगर 100 रन्स मुकम्मल हो जाते हैं इन कंडीशंस में, क्योंकि मौसम सरमा का ये टूर्नामेंट है, आप 150 रन से आगे निकल जाते हैं तो आप खेल में रहेंगे, लेकिन उसका बड़ा दारोमदार आमिर यामीन की बैटिंग पर है।
और जो पांचों विकेटें हमने आपको दिखाई, उनमें जो एक और बात मुश्तरक थी कि तमाम बैट्समैन शॉट खेलते हुए आउट हुए। टिपिकल T20 की विकेट्स थी। जी हाँ, परसेंटेज क्रिकेट देखने को नहीं मिली। आप उम्मीद ये करते हैं कि ये सीजन क्रिकेटर्स हैं, डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, वहाँ से आ रहे हैं, तो इनकी शॉट्स में आपको क्रिकेटिंग एस्पेक्ट नज़र आएगा। लेकिन एक कह ले कि फोर्स इशू को फोर्स करते हुए प्लेयर्स आउट हुए, मैन्युफैक्चर करते हुए शॉट्स को। शानदार शॉट खेला वैसे ऑफ द बैक फुट और कोई मोहलत नहीं मिली। डीप पॉइंट को 4 रन के लिए अच्छी बैटिंग का मुजाहरा। क्रिकेटिंग शॉट्स की बात की और ये यकीनन एक खूबसूरत क्रिकेट शॉट था, शॉर्ट एंड वाइड, और उसका पूरा फ़ायदा उठाया, कंट्रोल के साथ ये स्ट्रोक मारा और कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। 4 रन्स और नूरपुर लायंस को एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए और अवैस के लिए आगाज़ में ही, अपने करियर के आगाज़ में ही एक अच्छा मौका है। इस रावलपिंडी की पिच पर जो है ये 2 शॉट्स अगर आपको खेलना आते हों, एक पुल शॉट और एक कट शॉट, तो फिर आपको यहाँ रन्स मिलते हैं। ओवैस ने वही कर दिखाया इस ओवर में। इससे पहले अच्छे पुल शॉट हसन नवाज ने खेले थे इनिंग्स की इब्तिदा में। अच्छी गेंद बल्ले पर आती है और अगर आपकी उम्दा बैकफुट की टेक्निक हो तो यहाँ पर रन्स बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आखिरी गेंद इस ओवर की, 1 रन हासिल किया। आमिर यामीन स्ट्राइक जो है अपने हाथ में ही रखेंगे। 106 पे 5। ये शकरपड़ियाँ वो मकाम है जहाँ पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी ये संगम है दरअसल इन दोनों शहरों का। ये मकाम मार्कोर इनके लिए ये आज अच्छी सुबह साबित नहीं हुई। 22 अब तक टॉप स्कोर रहा है। हसन नवाज का रहा, अच्छी गेंद थी इमरान की और ये आज पटकते हुए नजर आए अपनी ज्यादातर गेंदें इस पिच पे। बिल्कुल, ये एक हिकमत अमली लगती है। आज तमाम बॉलर्स ने थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ ही बॉल की हैं और कंसिस्टेंटली की हैं, लेकिन हैरानगी ये है कि बैटर्स अभी तक इसको पकड़ नहीं पाए कि इतना जाहिर हो रहा है। एक बार फिर शॉर्ट गेंद, लेकिन ये सीधी गई डीप मिड विकेट के हाथ में। एक और विकेट गिरी नूरपुर लायंस की। 106 पर 6वां खिलाड़ी आउट हुआ और इमरान का जो शॉर्ट बॉल था वो काम कर गया एक बार फिर। आमिर यामीन इस बार। अब्दुल समद को अपनी जगह से हिलना भी नहीं पड़ा, एक कदम भी, और जिस मकसद के लिए उन्हें वहां पर पोस्ट किया गया था और जिस मकसद के लिए ये लेंथ की जा रही थी, आमिर यामीन ने ओब्लाइज कर दिया। यहाँ पर इस तरह छठे बैट्समैन जिनको मुंह की खाना पड़ी शॉट खेलते हुए। 8 रन बनाए यामीन ने 106 पर 6। शाहिद अजीज
इफाटा से आए हैं, ऑलराउंडर हैं, हाल ही में कायदे आजम ट्रॉफी में एक्शन में नजर आए थे। इनको हम देखने के मुंतजिर हैं। फास्ट बॉलिंग करते हैं और अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। अभी इन्होंने इस सीज़न में अच्छी बैटिंग की है 4 रोज़ा मैचेस में, और उसी की अशद ज़रूरत है नूरपुर लायंस को यहाँ पर, क्योंकि विकेटें जो हैं ये उनके औने पौने आज गिरी हैं। आमिर यामीन भी बाउंड्री को क्लियर नहीं कर सके। 66 मीटर की बाउंड्री थी। अगले कदम पर ये पुल शॉट खेलना, इसकी कीमत जो है बड़ी उन्होंने अदा की। चार रन मिल जाएंगे। थिक कैच लगा, डीप थर्ड मैन के फील्डर वाइड थे। इस तरह चौके से आगाज किया शाहिद अजीज ने। इस बार भारी किनारा लेती हुई गेंद जो है बाउंड्री पार कर गई, और शाहिद का जो आगाज है अर्ली ऑन, अगर बैटर को रन्स मिल जाएं तो थोड़ा नर्व सेटल हो जाती हैं। ऑल्दो ये फुल टॉस था, लेकिन जहां इसको शॉट लगना चाहिए था वो नहीं लगा, लेकिन नतीजा वो ही हासिल किया है। इस बार बेहतर खेला, बाउंस पर राइट किया अपने कद का इस्तेमाल करते हुए शाहिद अजीज ने। अब्दुल समद इन्होंने भी अपने खासे परस्तार पैदा किए इस चैंपियंस कप की बदौलत, जो फैसलाबाद में इन्हीं के शहर में खेला गया था अब कुछ हफ्ते पहले। इन पे भी नजरें हैं, आप इनको ओमान में भी देख कर आए। जी हाँ, कुछ इनिंग्स इन्होंने बहुत खूबसूरत खेली, बड़ी हिट मारने की महारत रखते हैं। इस बार सीधा ड्राइव डाउन द ग्राउंड, 2 रन्स के लिए वापस जाएंगे, और 4 रन्स हो गए शायद। ये नवाज जो है बाउंड्री सिग्नल कर रहे हैं, और यहाँ पे लगता है सिर्फ फील्डर को पता है कि 4 रन्स हुए हैं, बाकी सब फैसले के मुंतजर लगते हैं, क्योंकि सिग्नल किया है नवाज ने अपने हाथ से, लेकिन अंपायर जो है वो फोन अ फ्रेंड का सहारा लेंगे। यहाँ ये अच्छी प्लेसमेंट थी ओवैस की जानिब से, और ये झुकना चाहिए था यहाँ पर मोहम्मद नवाज को। सहल पसंदी का उन्होंने मुजाहरा किया। ये अच्छी आउटफील्ड है, यहाँ झुकने में कोई हर्ज नहीं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इनके पास कितना वक्त था, और गेंद की तरफ आने की बजाय वो बाउंड्री के साथ साथ ही वो दौड़ते चले गए मोहम्मद नवाज। बॉल को अटैक नहीं किया उन्होंने, बॉल को एस्कॉर्ट किया है बाउंड्री तक, और जैसे आपने कहा कि आराम से इसको झुक के पकड़ा जा सकता था, ये देखिए। और डेफिनेटली इनकी टीम और बॉलर और कप्तान इनसे खुश नहीं होंगे इस एफर्ट से। यहाँ बिल्कुल भी, क्योंकि सीनियर क्रिकेटर हैं जिनकी तरफ टीमें देखती हैं, खासतौर पर जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो देखते हैं अपने सीनियर्स की जानिब। क्या इनका जो पाँव है ये भी राब्ते में था, ये जो बाउंड्री स्कर्टिंग है गेंद आने से पहले, या उसके बाद भी गेंद जो है ये गई है। ये यहाँ इनके दाएं पाँव को छूने के बाद ये बाउंड्री ये होनी चाहिए शुमार, यहाँ इनकी नज़रों में भी नहीं रही गेंद आखिर में। टीवी अंपायर कैसर वहीद अभी खासा वक्त ले रहे हैं, हालांकि यहाँ पर कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। यहाँ जो गेंद जो है इनके दाएं पाँव को लगती है, तो उसके बाद ये लग रही है बाउंड्री को वाज़े तौर पर। यस, ये सीधी जाकर गेंद उस सहसर को लगी है। लेकिन अभी तक अंपायर जो हैं ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। छानबीन जारी है यहाँ पिंडी में। यहाँ टीवी स्क्रीन से तो खासा मुतमईन करने वाली तस्वीर नज़र आ रही हैं कि गेंद जहाँ लाइट बैंक लगा है वहाँ पर
जाके टकराया और यहाँ पर फैसला हो गया जी। अंपायर का इशारा 4 रन और 15 ओवर के अख्ताम पर 115 पे 6। बस बस ये सही है। लेग स्टंप मुगुरन साद मसूद राइट आर्म लेग स्पिनर अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। कट किया और यहाँ पर ये ज्यादा दूर नहीं थी। शॉर्ट थर्ड के फील्डर से खासा बाउंस मिलता है साद को, क्योंकि लंबे कद के हैं। खासा अच्छा क्रिकेट पिच है ये, हालांकि विकेट्स गिर रही हैं लगातार। ये बॉल शॉट है और इस बार खासा वक्त मिला बैटर को कि इसके नीचे से इसको लिफ्ट करें और इसे पहुंचा दे बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। और बैटर्स तो तमन्ना करते हैं कि इस तरह का बॉल मिले इस सिचुएशन के अंदर। और एक बार फिर गुगली की कोशिश, लेकिन लेंथ जो बैटर के लिए आइडियल और नतीजा भी। अच्छे लग रहे हैं अभी तक। शायद अजीज सिर्फ 5 गेंदें उन्होंने खेली हैं और महसूस हो रहे हैं वो इस सूरत हाल से। इस बार मिड ऑफ के फील्डर पीछे रह जाएंगे और ये आखिर में लाजवाब कैच। ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वहां पर अब्दुल समद थे, वो दौड़े चले आए, अच्छी फिटनेस उन्होंने दिखाई और साथ साथ अच्छी निगाहें, महफूज हाथ और लाजवाब रीच भी। बहुत ही शानदार कैच। भागते हुए आगे की तरफ डाइव करना कभी भी आसान नहीं होता फील्डर्स के लिए। और फ्रंट फुट चेक कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि बिल्कुल बेहतरीन जगह पर है। और एक छक्का लगा अभी और फिर वही चीज हमें देखने को मिली कि गेम अवेयरनेस, बोर्ड को नहीं देखते बैटर्स। एक बार फिर हिट मारी और कन्विंसिंग नहीं थी। किसी मौके पर यह नहीं लगा कि बड़ा हिट मारने गए हैं, छक्का मारने गए हैं। सिर्फ लिफ्ट किया बॉल को शाहिद अजीज ने और 11 रन बनाकर पवेलियन में वापस जाना होगा। 7वें विकेट के नुकसान पर 121 रन नूरपुर लायंस के। वकार यूनुस, अब्दुल रहमान, ये डगआउट कतई तौर पर खुश नहीं है। नूरपुर लायंस के बल्लेबाजों ने अब तक जो कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी नहीं है। सेट होने के बाद, गेंदें खेलने के बाद आउट हो रहे हैं। एक और गुगली इस बार भी विकेट लेने के करीब आ गए थे। लेग स्पिनर जिन्हें जाहिद महमूद की जगह पर आज खिलाया गया और अपना इंतखाब जो है उन्होंने सही साबित किया है। सीनियर्स क्रिकेट में पहली बार नजर आए। जी हाँ, एक अच्छी आउटिंग रही है इनके लिए। बॉलिंग सादा। हर एक बॉल के बाद एक गुगली कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जब ये गुगली कराते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। ये वो शॉट जिसकी कतन ज़रूरत नहीं थी छक्का मारने के बाद, और हमने इन तमाम डिसमिसल्स में और तमाम बैटर्स में ये चीज़ यकजा देखी है कि ये हवा में शॉट खेलते हुए सारे ही आउट हुए। हालांकि शायद ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि जब आप हिट लगाते हैं इन द एयर तो आपकी उतनी रेंज नहीं होती ग्राउंड शॉट खेलते हुए जितनी एक बैट्समैन की हो सकती है। अगले स्पेल में हम सलमान भट्ट से इस पे बात करेंगे। 121 पर 7।
They never gained momentum, Nurpur Lions, but still some good shots can earn them boundaries, and they can take them to a total which is beyond 140 and can make a match out of it. Nisar Ahmed is coming back to ball. 3 remarkable overs, only 12 runs given away. And he continued doing great things. He started the proceedings with a couple of wickets, and since then, they never could start gaining the momentum throughout this innings, Shah Faisal. It's been a shorter ball approach from Nurpur Lions from the very beginning. Cast your mind back to the first delivery that Imamul Haq faced. He charged down the wicket to Akif, smashed him for a boundary. It's been a hit and a miss. Extra bounce has meant that a lot of those attempted big hits found the splice of the bat and were caught, like Tariq Said was just mentioning a while ago. This is once again gone in the air. Not a clean strike. Not an easy catch as well. Going back, never easy are those catches. Couple of runs for Awaz, who's still in the middle. And this is where the duties of these mentors come big and come hard, that how they are going to guide throughout the course of this tournament, where there will be game coming thick and fast. If that was a triangle, that landed right in the middle of all three. Not too much of bounce on the offer, and Awais is doing some great things. Wild swing and also great backlift on another single to him, but this will be a question that how long they are going to continue with these kind of shots, and if he will be forming the innings in some point in time. Well, Waqar Younis with the ball in hand. Obviously, we know that he does know a thing or two about fast bowling. A great legend. Yeah, the question at the moment is the tactics with which the Nurpur Lions have gone. And I'm pretty sure Waqar Younis must have a lot to do with that. A shorter ball approach that I was talking about. Beginning of a new T20 season, there is always the talk of a modern day approach to batting. And we've seen it firsthand today, although it hasn't come off today for Nurpur Lions. It'll be interesting to see if they persist with this approach or not. But it looks a very clear plan that they decided to go hard for the length of the 20 overs and not worry about losing their wickets. Today, they've needed only 125 so far. Add a single to that. Yeah, talking about Bahria Town Champion Cup, that is one expected outcome of this tournament, that you will be able to get some players to that required level, which is comparable to the international arena, and also you can get that fear of getting out of your mind. So it has been a tough rope to walk, especially in the earlier part of the tournament. More runs for Musa, and this time he will earn a boundary. Crucial runs for Nurpur Lions. Musa will need those runs when he gets the ball in his hand. 17 gone, 130 for 7. Nisar has bowled out. Imran is the specialist death bowler for the UMT Markhors, and he is into his third over. He's been expensive. Last ball, last over. Thick inside half of the bat. Little bit of swing, tail in as well. Some part of the square is pretty abrasive. The outfield is cut pretty short. I'm just wondering if we will be able to see some reverse, the kind of action Nisar has got. Probably he can do that. But talking about Imran with his variation and change-ups, he's really been given that role wherever he plays to close out the innings.
These bowlers are worth in gold if they're good. And Imran looking to make a living out of that role. A lot of trigger action on part of Awais. Once again, he showed all three stumps and then came back to cover those stumps and played along the carpet towards the fielder at mid-wicket, and then at this point in time towards the extra coverage. The fielding has been phenomenal. Only one drop catch so far, but otherwise they have grabbed everything which came their way. Rawalpindi and Islamabad passed under the glorious sunshine of mid-December. No smog, no fog, and no chance of rain. Perfect day for cricket. You saw that picture and the visibility is great actually. You could see in the distance sometimes on a foggy or little bit of smog early winter here in this part of the world. Not to be today. Look at that, the visibility. You can look all the way down to the Margalas in the distance. Great pictures here in Rawalpindi. Remember, the entry is free for all the premium stands here at the Rawalpindi Cricket Stadium. If you go around Shoaib Akhtar enclosure, Sohail Tanveer enclosure, as you see, one for the over. Imran does make a good use of the short pitch delivery. So the whole of Shoaib Akhtar enclosure, Sohail Tanveer enclosure, to the right of our commentary box are free. The entry is free here for most of the group games, including today. Nicely crunched, but the field is set deep inside the ring. Iftikhar wouldn't mind giving away the run. 18 gone. Nurpur Lions 133 for 7. Twelve legal deliveries left in the innings, and so far Awais Zafar has been doing phenomenally well. And awesome action time has arrived for the right-hander batter. He has been trying a lot of movement to grab the ball and go underneath it, especially to go big across the stumps and play towards the mid-wicket region, but could not get hold of that one. But once again, just 3 boundaries of his innings, 28 runs on 26 deliveries, but perhaps now the time to go big. 11 deliveries to go in the innings. Once again, not a clean strike. Running hard, but this outfield is very fast. Unless you hit it in the gap, you're not going to get 2 here. You're finishing off that point, Akhil, on the free entry. I mentioned the side to the right of us. On our left, the Yasir Arafat enclosures and Amira Bakhsh enclosure, where the old scoreboard used to be. Those stands also, the entry is free. Only the VIP stands you pay to get in. Helped on its way. Just created that length by moving right across his stumps of Awais. And he's holding the fort for Nurpur Lions. Calypso style this time by Awais Zafar. All stumps exposed, but no problem whatsoever. Making full use of the field conditions and played in the weekend region for his 4th boundary so far. So he's head and shoulders above the rest of the lot in terms of the scoring. The top score of the innings, 32 runs already for him, 9 deliveries to go. Good signs for Nurpur Lions in the opening game. The other thing which we will continue to talk about, that not only the momentum and the combination of the teams will be decided in the first phase of this tournament, but also the teams would like to assess that which condition will suit more towards the bat first or the bat second aspect of the game, and also which is going to be the power scope. So they can make a match out of it. Akif has done well here, looking to follow the batter.
making a comeback after injury. Akif Javed. Just a good workout for him, although he's been a touch expensive today. Conceded that first wide, 5 wides actually in his first over. This time he's done well. Tailing the ball back in. That length wouldn't allow the batter to go underneath it. Iftikhar will be very happy with the proceedings so far. 139 on this Pindi pitch. Look a bit light at this stage. Another swing and a miss. Once again, good bowling, good pace from Akif. The more he plays, the more he'll get back into his rhythm, the kind of rhythm he showed in Faisalabad. He was in terrific form then. Yeah, this is good contest between Akif Javed coming wide of crease, creating that angle, but also the bounce which is available on this Rawalpindi pitch. He tried to go big against Akif Javed, but this time there was no connection whatsoever. Awais Zafar, remember, is coming on the back of a good 145 against Islamabad in the Qaid-e-Azam Trophy. Single to end the over, and quota of Akif Javed, 1 over to go. 14047. Barrier Town Champions Cup T20 2024 free entry for premium enclosures for the most part of the tournament until we get to the knockout stages. But it's been a good start. Glorious day in Rawalpindi. Cannot ask for better conditions for a game of cricket. In fact, cannot ask for better conditions to play cricket and watch cricket as well. Open stands here at Rawalpindi. You can come here and get plenty of vitamin C in this weather and also enjoy exciting cricket. Plenty of food options in and around this area. Can be a good day out of entertainment. This time got the connection, almost played into the gap and earned a boundary. Awais is looking promising in Rawalpindi. His 5th boundary of the innings. Massive connection. And this is the shot they needed. He's tried that against Akif, gave himself some room, but Akif was able to follow him. Imran didn't, allowed him to free his arms, split the gap beautifully. There were 2 sweepers, but it went right in the middle of that, where Awais is making a good account of himself. This time a bouncer slightly higher. 1 for the over, calls umpire Imran Javed. But this is the strength of Imran, the bowler, his variations. They must be discussing a lot of things. Tournament director Wahab Riaz and the mentor of Nurpur Lions, Waqar Yunus, keeping an eye on the talent, on the proceedings, the scheduling. This is a remarkable aspect. More runs for Awais. That the games are being organized during the daytime, which has been mandatory to get the most out of it and to get the due out of the equation. In the meantime, they are continuing to run and came back for the 3rd one as well. So some crucial runs for Nurpur Lions, and in that process, in the blink of an eye, they are just a stroke away from 150. A bit of a helicopter flick with no elevation. Up until here, it was good from Markhors, but then Imran, trying to attempt a run out, has conceded another run. 144 with 1 delivery to go, two deliveries to go rather. 147 on the brink of that 150 that you were talking about. Once again running hard. Fielder has to come in from quite deep, and they will come back for the 2nd. Good hustle from Nurpur Lions. Yeah, Shah Faisal, we're talking about the day games, and if we talk about the lowest winning total in Rawalpindi
for a day game in the last 5 years. This has been around 144 of 145 region. Northern has achieved this feat once against Khyber Pakhtunkhwa in 2020 and the same year against Southern Punjab. Once while scoring 144, the second time 145. They are well above that, on the brink of 150. Yorker to finish off the innings. Brilliantly bowled by Imran. Just a single will mean that Nurpur Lions will finish on 150. A bit of a psychological bonus. And they've got runs on the board, but conditions here at the Pindi Cricket Stadium are terrific for batting. Good bounce and a fast outfield. Nurpur Lions would feel a touch disappointed with this effort. Iftikhar and his charges must be feeling very confident at the halfway stage. Remember, they won the toss and they decided to bowl first. Explosive batting lineup of UMT Markhors walking out at this stage would feel that they've got the job done pretty well so far. The innings breakdown, it never really took off. Those 35 for 1 in the last 5 overs is not a good return. That is on the back of losing 4 wickets in the middle phase between over number 7 and 15. Yeah, plenty of stop starts, but other than a waste zafar, no one could make a mark in Rawalpindi the first game, and we'll have to wait and see that how good it is going to be in these apparently batting friendly conditions. Remember, this is the first game, so a lot of agenda is Tariq Said is downstairs and he is ready with Sarwar Afridi. ये सरवर आफरीदी इस वक्त हमारे साथ हैं जिनने बड़ी नफीतुली बॉलिंग की और 2 विकेटें हासिल की, इमामुल हक को भी आउट किया, तो यकीनी तौर पर उससे ज़्यादा महसूस हुए होंगे उसी विकेट से। जी जी बिल्कुल जी, पिच अच्छा था, मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्लो पिच था। जितना आप इस पिच पे ऐसे पिच पे ना लेंथ बॉल करोगे तो कामयाब होगे, और मेरा यही प्लान था कि मैं लेंथ बॉल करूँगा और कामयाबी मिली। तो ये जो 150 रन बने हैं इस आपके बकौल स्लो पिच पर, आप समझते हैं कि ये चेजेबल हैं? देखिए जी, हमारी बैटिंग अगर देखा जाए तो लास्ट 10 तक हमारी बैटिंग है, तो इंशाल्लाह इजी चेस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज सोच कर क्या गए थे, आपने फील्डिंग करने का फैसला किया था टॉस जीतने के बाद आपकी टीम ने? जी जी यही प्लान था कि ज़्यादा रन्स नहीं देने, लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है, उसके हिसाब से फिर प्लान बदलना पड़ेगा। अगर मार खाएंगे तो फिर प्लान बदलना पड़ेंगे तो उस पे कामयाबी मिली हमें। तो अब बॉलिंग आप रेगुलर करना शुरू हो गए हैं, हालांकि आप हार्ड हिटिंग बैट्समैन है सरवर आफरीदी। देखिए जी, बॉलिंग भी मैं करता हूँ, ये नहीं कि मैं बॉलिंग नहीं करता, बॉलिंग भी करता हूँ हालात के मुताबिक। अगर मुझे बॉलिंग मिल जाए तो मैं बॉलिंग भी करता हूँ, ना मेरे कोई फिक्र नहीं हो अगर मैं उसका हिस्सा नहीं बनता कप्तान का उसका, तो कोई बात नहीं, लेकिन बॉलिंग मैं करता हूँ नेट में। तो सरवर जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से T20 क्रिकेट में आना, एडजस्टमेंट करते हुए जाहिर है कि मुख्तलिफ तैयारी करनी पड़ती है। मुश्किल काम होता है जी, लेकिन देखिए कैंप लगा था 6-7 दिन का, तो प्रिपरेशन हुई थी वाइड बॉल की, तो फिर हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सरवर आफरीदी, बैक टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू जी, थैंक यू। Sarwar Afridi there. So Nurpur Lions catapulted to 150 runs. They were sent into bat by UMT Markhors, and this is the way they started the proceedings. Ishan Malik, courtesy a boundary, he was looking good, and then came Nisar. They continued to go big against the bowling. They got the wicket of the set batsman Ishan Malik. He rode on the bounce in that process. Hassan Nawaz, he was taking the bull by horns, but then came
a couple of wickets, and that ripped the momentum of the Nurpur Lions. They were doing great guns until that point in time, but then that was the wicket number 2, which came in 48 runs mark, and then Imamul Haq, which was looking aggressive. They dropped one catch, but could not make most of it. Yeah, they kept going hard. Taha also had a life, but he wasn't relenting. That was the drop catch, a difficult one by Samad. Boundaries came in between, but they were few and far between. Rohail showed glimpses of his innovation, but then perished to the same stroke. Saad, though, really came to the fore in the middle, and wickets kept tumbling. That was the feature. That's why there was no partnership and no momentum, especially towards the back end of the innings. Over number 7 to 15, they lost 4 wickets, and then 15 to 20, the runs didn't come because the lower order were in the middle. Job well.
which could make them look good and take them to a bigger total. This is how the wickets fell. Zishan Malik, after scoring a couple of boundaries, played one in the air. A great catch in the end by Fakhar Zaman. Hassan Nawaz was riding the bounce, but he also played within the square. Imam ul Haq was using his feet a lot more often and tried to clear that region towards the extra cover, played right into the hands, and a great catch in the end by Nawaz, running towards his left and also into the circle as well. And then came a flurry of wickets. So this was the way and the time when they lost the momentum clearly. Back-to-back wickets put them in trouble. But one thing which could not see is the innings of Awais Zafar in those highlights, which has been remarkable. A couple of wickets for Nisar, Sarwar and Saad, especially Nisar was looking good, making full use of his height and physique. He made the ball talk. He also converted that bounce available in this Rawalpindi Cricket Stadium pitch and surprised the batsmen with those odd deliveries which kept on coming towards the batters and crammed them for room, and they could not went big for scoring opportunities. Remember, this is only the game number 1. There will be double headers. Every team out of these 5 teams will have the opportunity to come across the other team twice. This was a different format when we observed the One-Day Champions Cup in Faisalabad, and there every team had one single opportunity, but here every player will get his kind of opportunity, and especially the likes of Awais Zafar and Hassan Nawaz would like to go big and make full use of the number of games and the mentorship of Waqar Yunus, Misbah al-Haq, Saklan and everyone. This is Bahria Town Champion Cup, the curtain raiser. We are ready for the flash interview with Imam ul Haq. I think it was a very good 15 to 20 days which we had. We had a great days together all together. It was a new team. अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो टूर्नामेंट पूरा हमारा मैच वॉश आउट ना होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लायंस जो है पीक टाइम पे जो है हमारा कम्बिनेशन बना था, और अगर आप देखें कि उस टूर्नामेंट से हमारे 3 से 4 प्लेयर सडनली पाकिस्तान के लिए पिक हुए, तो जिसका बेसिकली क्या था कि ये चैम्पियंस कप जो है इसका मोटिव यही है कि यू जस्ट गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू द यंगस्टर्स, एंड वो फिर पाकिस्तान के लिए खेले. हमारे बहुत सारे प्लेयर का डेब्यू हुआ, अहमद दानियाल, फैसल अकरम, उमैर बिन यूसुफ, और ठीक है, तो काफ़ी सारे जो लड़के खेल रहे थे. आमिर जमाल का कमबैक हुआ वाइट बॉल में. तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं, और मेरे ख्याल से हम बहुत क्लोज थे. मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मैच होता तो हमारी फेवर में जाता, एंड वी कुड हैव डन बेटर. तो काफ़ी अच्छा हमें मज़ा आया, बट मेरे ख्याल से अब वो चला गया. इट्स अ न्यू टूर्नामेंट. काफ़ी सारे लड़के हैं जो यहाँ पे नहीं हैं. हम मेरे ख्याल से 5 से 6 लड़के हैं जो उस वनडे वाले उसमें टूर्नामेंट में थे. इट्स अ न्यू चैलेंज, क्योंकि लड़के थोड़े से फोड़े खेल के आ रहे हैं, थोड़ा सा बॉडी भी थकी हुई है, थोड़ी इंजरीज़ का हमें है. फिर शाहीन भी नहीं है, अब्दुल्ला भी नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, बट मेरे ख्याल से इट ऑलवेज गिव्स अ यंग प्लेयर टू कम एंड टू परफॉर्म. तो मेरे ख्याल से हमारा मोटिव यही है हमेशा, वकार भाई का, हमारा सबका, कि जस्ट टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट and just no fear, and always there's always an opportunity to perform and Pakistan ke liye khele. So it's going to be a very good exciting tournament for us. I've already given all the messages to boys, but देखें, मैं हमेशा, मेरी पर्सनालिटी भी खुद है कि मैं कोशिश करता हूँ कि allow them to play what they want to play. So हमने एक जो मैसेज देना था वो दे दिया है. मेरे ख्याल से जो प्लेयर की ग्रोथ होती है वो तभी होता है जब वो खुद डिसीजन करता है. उसमें ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टाइम लगता है. यू हैव टू बी पेशेंट इनफ. वी हैव अ वेरी यंग टीम, तो वो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो मिस्टेक्स होंगी. बट मेरे ख्याल से प्लेयर की ग्रोथ तभी होती है जब उनको आप एक अच्छे एटमॉस्फेयर में क्रिकेट खेलें और वो उससे मिस्टेक्स को लर्न करें. यस, हाँ, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो ट्यूरिंग होने वाली होती हैं, और मेरे ख्याल से वहाँ पे अब्दुलरहमान भाई, वकार भाई इज़ देयर कि टू हेल्प देम. बट मेरे ख्याल से कोई ऐसा सच मैसेज नहीं है. हमेशा इन्जॉय करते हैं. हमने उस फैसलाबाद में भी बहुत इन्जॉय किया था, ऑल्दो हमारा स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था. वी लॉस्ट फर्स्ट मैच, और उसके बाद हमने इतना अच्छा कोई खेला नहीं था, लेकिन हमने तब भी इंजॉय किया. उसके बाद हमने देखा कि यही लड़के थे जिनकी तरफ से परफॉर्मेंसेज आई. तो देखें, इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और इक्वालिटी के पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते प्लेयर्स को. तो इक्वालिटी भी मेरे पे हमेशा मेरा फोकस होता है कि मैं हर प्लेयर को, चाहे वो शाहीन है या चाहे वो खुशदिल है या चाहे वो नया बच्चा फैसल अकरम है,
मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्रीटमेंट जो इक्वल ट्रीटमेंट दूँ और जो जो उनको चाहिए वो वहाँ मिले, तो फिर मेरे से ऐसा लगता है कि एक वो फैमिली वाला माहौल बन जाता है और फिर सारे जो है मिल के जब चिपिंग करते हैं, इट्स अ टीम गेम, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल गेम। तो जब सब मिल के टीम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो फिर परफॉर्मेंसेज आती हैं। एज ए कैप्टन, अगर कैप्टन ही ज़रा जल्दी हीट ऑफ द मोमेंट में यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। तो क्या होता है कि अगर आप हीट ऑफ द मोमेंट में कोई ऐसी चीज़ आप कर देते तो ना, तो उसका इम्पैक्ट पूरी टीम पे पड़ता है। तो आई ऑलवेज ट्राई कि जो भी करंट सिचुएशन है तो उसमें जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, ऑब्वियसली अंदर से तो आप फील कर रहे होते हो हीट, बट द थिंग इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो सामने से ना दिखे ताकि पूरी टीम पे इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसलिए बस कोशिश होती है कि जो इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस जब हम खेलते हैं तो उसको जो है फिर डोमेस्टिक में जो है वो उसको अप्लाई करें और इतना ज़्यादा शो ना करें। तो इतना मुश्किल होता नहीं है, बट ये होता है कि अगर आप ऐसे हीट ऑफ द मोमेंट में आपको समटाइम्स गुस्सा आता है तो फिर उससे ये होता है कि बाकी टीम पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि जो है अपने आप को काम और ऐसी सिचुएशन पे जो है थोड़ा सा एंगर अपना साइड पे रखें। Yes, he always been cool and calm, and now let's see that how he will continue his composure, captaining Nurpur Lions, defending 150 against the likes of Fakhar Zaman and a strong star-studded UMT Markhors. So time to welcome Salman Bhatt in the combo. Thank you very much, Samar Bhai. And it's Fakhar Zaman, and his record is on display. Massive experience. He carries 259 games, close to 7,000 runs. An explosive player by nature. And on the other end is young Nafe, who's another explosive batter. And both of them, if they stay any length of time with this new ball in hand of Amir Yamin, they'll get their team off to a flyer. And UMT Markhors will look to get these runs ASAP to register a thumping win. But we shall see what happens in a moment to come. Right on money, Amir Yamin on the very first delivery. What do you make of the conditions, especially the pitch, after seeing the first innings? Because the bounce was at times quite steep, but at times not too much. It's a fresh pitch. It's a decent cricket pitch. It's just the way those batters took up the job. I think they were forcing the issue at times, not realizing the situation, not looking at the scoreboard, not doing what was required. And game awareness, once again, is the key. It doesn't matter which format you play, some things don't change. This one is down the legs, and Fakhar goes for it, doesn't connect, will be a wide. And Markhors, UMT Markhors are on their way with a wide down the leg side. Yeah, we would expect whenever we play in Rawalpindi, you must have fond memories of gathering that partnership with Kamran Akmal, which is the top run getter in this Rawalpindi Cricket Stadium about, what, 7 years back? Absolutely, how can I forget that? Majestic knock from Kamran Akmal, and I had the best seat in the house watching him from the non-striker end. And this is a quick single, and Fakhar, well, he's quick between the wickets, he's always been, and he's somebody who he kicks off well, can give his side a massive advantage. And this is good, and this is something which did not witness from the side batting first. That was push and run, because even if it's a T20 game, strike rotation is a very important factor, and at times the key factor. Talk about good partnerships, it's a very important element of any good partnership, strike rotation. Strong appeal by Amir Yamin and given by the umpire. He took a long time to declare Khwaja Nafi out. A big wicket indeed. Khwaja Nafi is an exciting player, but right on the very first delivery, he departed and Amir Yamin strikes. Well, everybody in the country knows that Amir Yamin's new ball comes back into the right hand, and it was strange to see Nafi, no feet at all in the stroke, neither went forward, neither went back. Well, it was the one to go forward to. This is going to be the front foot check, but I think the batter is walking away, because yes, the front foot is perfectly behind the line as well.
And Nafe, for some reason, was stuck in the crease. And he has to pay the price. Goes for a duck of the first ball. And it's 1 for 2. Covering leg stump. Three more to come. Okay, sir. Shahzad replacing Khwaja Abdul Nafi, and Amir Yamin striking in the very first over. This is a picture-perfect script for UMT Markhors. Not too much for them, but also for the Nurpur Lions. 7 games for him, 70 runs, and it will be a huge task for him, especially to weather the storm which Amir Yamin has just created out of thin air. Early days in his career for Shahzad. He averages 18, and this certainly is a massive opportunity. Bahria Town Champions Cup T20 2024. And here he is, first ball, aggressively down the ground. Doesn't get the result in the desired area, but does get the result, which is 4 runs. And the UMT Markhors move to 6, but living dangerously at the moment. He hit the ground running, Shahzad, and quite a lot of aggression right on the very first delivery. You're trying to play big against a bowler who just grabbed a wicket with that in-swinger and given no respect to Amir Yamin. And in that fashion, they earned the first boundary, UMT Markhors. Well, something that we have seen since morning has been loads of premeditation. Batters going down the pitch, and some of them doing it on the very first ball, as if there's a pre-mindset to go after the bowler right away. And once again, talk about game awareness. There's only 150 to get. Just the first wicket has fallen, and straight away we see ultra-aggressive stroke making. Once again down the pitch. This time the bowler just pulls back the length, and first over gets completed. UMT Markhors 6 for 1. Best possible start for Nurpur Lions, especially after losing 5 wickets for 86. They came back, amassed 150 runs, and they have already got rid of Khwaja Nafi, who is an exciting prospect on the very first delivery. Ball to him. Fakhar Zaman still to score a boundary. Mohammad Shahzad going to play a big shot, got an edge, got a boundary. So we've got all the ingredients of an interesting T20 game, only in the curtain raiser of this Bahria Town Champions Cup. Salman is coming on to ball from this media end, or we could rather call it Margala end, just right behind us. These are the Margala Mountains. Tall and would like to make the full use of the bounce which is on offer in Rawalpindi pitch. First ball delivered, and that's all I have seen of Salman. Shot and wide, and the umpire signals a wide. Fakhar Zaman giving it the full Monty, but not making the connection. And they have the sort of total where they'll have to bowl well, they'll have to pick up wickets to keep the pressure on the opposition. And UMT Markhors will look to go big in the power play, especially till the time Fakhar is around. That is something which comes very naturally to him. Once again, short and wide, but this time it's not a wide ball. Nisar started the proceedings for UMT Markhors from the other end.
and stop the flow of runs, and this is almost the same thing which is Salman doing from the other end. He's tall, has got a strong physique, got the muscles on his body, and can deliver the ball, the odd one, the heavy ball, which could surprise the batsman. But Fakhar on the other end especially likes to make use of the short ball, which is if offered to him. Remember, this is a very strong batsman on the onside. Well, this one is bowled within the stumps, and the single has been taken. It was on offer. The fielder was on his heels. He came back in after realizing that the batters are looking for one, but by the time that happened, it was all too late. And Saad Khan here, and the fielders in the ring. Well, in a T20 game, it's never easy for the fielders to make out what to do, stay on the ring or charge in, because Fakhar Zaman can really give the ball full Monty. And so far, it's 7 for 1. And Salman, tall guy, looks to have decent pace. Still got one slip in place and got one fielder at 45. Mohammad Shahzad has been asked to play big. Exposing all the stumps and got different ideas, Shahzad. Well, this is, I don't know how to describe this. The first ball he came and faced, he went down the ground. And this time, the first ball that he faces from Salman, he moves towards the leg side and miles away from the ball. And obviously no connection there. So Shahzad definitely is premeditating. And once you start to do that, you need a lot of luck. This time the bowler follows him and could have been very uncomfortable had that hit him in the ribs. Just went through. And the keeper, Rohail Nazir, doing well to collect it from the leg side. Two wides already of his first over, but nonetheless he's been looking good, Salman. And the remarkable aspect which has been in his bowling so far is that he is not shy of delivering those short balls despite the boundaries are quite short. And even a fall shot could fly out towards the boundaries, and even it could be a maximum. Well, Salman certainly is an instinctive sort of selection because he doesn't carry much background as a player. There is no record that we can tell of, and probably somebody like a wild card has got his opportunity, and it's a massive one here at the Barrier Town Champions Cup. It is the T20 edition of this Champions tournaments, and a very important stage. In the end, no boundary of this over. UMT Markhors are still struggling, 10 for 1. And still one delivery to go, courtesy those couple of wides. So Fakhar Zaman was asked to go big through the covers or over the extra cover, the kind of shot which Imam ul Haq was trying to play more often than not. Yes, it has been a common trait seen by all the batters across both teams today, moving away and trying to go big on balls that are short of length. Once again it has been tucked in short, but this time steered to the third, and Fakhar gets an easy one. The UMT Markhors move to 11 of 1 of 2 overs. Yami to continue from the pavilion end. This is the curtain raiser of Barrier Town Champions Cup. UMT Markhors are still trying to find their feet on the ground.
Just one boundary off Shahzad off an inside edge against Amir Yamin. But other than that, a lot of attempts, airy-fairy shots, but all of them went in vain. And especially the way they have been able to tie down Fakhar Zaman and not being able to play a big shot has been a bit of a question mark for UMT Markhors. They are scoring only 151, so they don't need perhaps a power play which will yield them a 50 or 60 runs. Even a 30 for 2 or 40 for 3 could still do good for them. It's been a good cricket pitch. It's not something in the favor of the batters in entirety. There is something for the bowlers as well, which is pace, bounce, a bit of movement with the new ball. You expect that in December. They're the cooler months in Pakistan, especially here in this region, Islamabad, Pindi. Once again, opens up and moves his front leg towards the leg side, tries to create room, but no success in hitting the ball. So he hasn't been on song, Fakhar. Things haven't been smooth for him on the crease. Just have a look at this. It's looking to go hard at the ball. And sometimes it's not the greatest of ideas being an opening batter. Amir Yamin got a couple of games in the Qadr Trophy for Multan. And this is the brutal Fakhar Zaman for you. Down the track, straight as an arrow. And finally the first boundary from the sailor. Yes, this time he connects, dances down the track and takes it from there and flat bats it over the head of the bowler. And what we see in the back is half screen, which is black, and the other half is yet to turn black. But it doesn't bother Fakhar Zaman. He's hit that over the ball of a 4. And this is something that he looked to do more often. What will he do with the full backdrop if he could do this with half of it? But yes, this is Fakhar Zaman for you. If he can get going, he can make it easy for UMT Markhors. Well, it's surprising that the batter, definitely, they have a look at the screen first before they start to go. And half of the screen is black and the half of the screen is showing an advert. And I wonder that none of those two batters at the crease have taken notice of that. And this time he goes, swats it between square leg and short fine for another boundary. So this is Fakhar special for you. He will play shots which are extraordinary. And at times you think that only Fakhar can do these sort of strokes. Just have a look at this. Almost a sweep. Strong forearms, quick bat speed, and that opens the area for Fakhar Zaman. Even though the ball was way outside the off stump, he did drafted it once again towards his favorite region. And the rest is history, and that is a couple of boundaries. The first two for Fakhar Zaman in this over number 3. Quick single to end finally a good over for UMT Markhors. After 3, they are 22 for 1. So UMT Markhors are finally able to find their feet in Rawalpindi Cricket Ground. 22 for 1. They're in pursuit of 151, which is kind of a dodgy target. Remember, Nurpur Lions catapulted to this 150 after losing 6 wickets for 106. And once again, good connection, but straight to the field. Yes, one thing has been consistent, that the front leg of Fakhar Zaman has been opening up towards the square leg and trying to create room every time to allow his bat to access freely and to swing those arms as hard as possible.
and young children coming in and watching their heroes, and it's a good sight. Parents bringing in young ones. Once again, he looks to go over, doesn't connect, but he will evade the fielder and he'll get a couple. A risky one though. The score moves on to 24. Fakhar Zaman chancing his arm, and UMT Markhors move on. Nurpur Lions, they would love to see more wickets fall. In the previous over, he tried to play such kind of a deliveries through the covers or over the extra cover region, but now it looks like that he decided to go big towards his favorite region. Azhar Ali, who is now leading the youth development program of Pakistan Cricket Board, would like to keep a keen eye on the proceeding of this tournament. Another extra during the course of this inning. Remember, there were 17 extras in the previous innings as well. So Pakistan playing quality cricket in the Under-19 World Cup. Unfortunately, they could not qualify for the finals. And with the kind of players which are coming through the ranks, is looking good. In the meantime, this is free hit available, and this is the disastrous combination for Nurpur Lions. Fakhar Zaman on strike, free hit available, and he could go big as he liked. Well, once again moving away and further away from the ball, not allowing himself to go closer to the ball and not making good connections. And it's been consistent, and Fakhar not realizing that, just have a look at this, opening up towards the leg side, takes himself further away from the ball, and this is not an ideal position to hit the ball hard. The bowler predictably has been short, and that a batter should be able to use in his favor. This time it's Fuller, he appeals. No response from the umpire. Leg by. Finally, a change of plan on part of young Salman. This time he held the length a little bit, and Fakhar finally had to play that one with kind of a straight bat, but still could not hold that one. With Khwaja Nafi already back in the hut, with the likes of Iftikhar Ahmed and Abdul Samad along with Nawaz to come, this should be straightforward proceeding for UMT Markhors, but this would be key, that how they are going to finish in the first 6 overs. That is obviously the power play, and if Amir Yamin would be continuing after kind of a mixed first 2 overs from the other end. He gave away 17 runs. Good going by Salman so far. Well, this time it's a ramp stroke off a short ball, and he succeeds. He awaits the keeper, gets the boundary, but Shahzad hasn't been convincing. So he's come in. I think he's been given a role to go after the bowlers. Just have a look at this. Goes towards the offside, and we spoke about the length being predictable, and this is what he has done, taken advantage of that predictable length. So 30 now. The score is for the UMT Markhors for 1. And it's going to be last ball of the 4th over. This time it's up in the air, and the fielder is under it, and he takes a simple catch. Once again, Shahzad looking to go big, and this time the ball was short but outside off stump, and no timing, not a good connection. He ends up giving up his wicket away, and it's 30 for 2 UMT Markhors at the end of 4, and no ball check might be interesting over there. The umpires will have a look, and I think another angle will be helpful for all of us. Yeah, that looked touch and go, but because there was no conclusive evidence, they might go in the favor of Nurpur Lions. They are still waiting for the final verdict, apparently, from the umpire. This is the other angle, and it is another touch and go, Salman. This could be interesting. Something needs to be behind the line, and it will be interesting to see the first point of contact. Well, it is touch and go, and
You can argue that the heel has something, but I think a different angle might be giving us some conclusive evidence. At the moment, it can go either way. So it's gone in the way of the fielding side, and the batter will have to go. The second wicket is officially down now, as UMT Markhors at the end of 4 overs are 30 for 2. So Zishan Malik took that great catch. He's the local boy, and he knows the familiar surroundings of Rawalpindi that was having the backdrop of glorious sunshine on this mid-December, but in the end grabbed it perfectly. Shahzad is back in the hut. UMT Markhors are now 30 for 2. अब्दुल समद को मैदान में जल्दी उतरना पड़ा है क्योंकि 2 विकेटें गिर गई हैं। 4 ओवर तक ही मूसा खान आज अच्छी तेज बॉलिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर नूरपुर लायंस की जानिब से। मूसा खान अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है, हाल ही में ये इस्लामाबाद के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए आए हैं। हवा में खेल गए और कैच गिरा गया। और यहां पर फैसल अकरम थे, उन्होंने ये संगीन गलती की। खासी मोहलत थी, उन्हें ज्यादा हिलना भी नहीं पड़ा अपनी जगह से, और ये खतरनाक साबित हो सकता है। फखर जमान थे इस बार जिनको फायदा हुआ। आप ऐसे मौके फखर जमान को दे नहीं सकते। मूसा की पहली गेंद काफी तेज रफ्तार थी, हालांकि काफी बाहर थी, इसलिए बल्ला चलाने का मौका मिला फखर को। अंपायर शायद देखना चाह रहे हैं, बाउंड्री चेक भी है, लेकिन कैच का मौका जाता रहा। यहां फैसल अकरम ने अंपायर की शायद मदद की कि यहां 4 रन मिल जाएंगे फखर को। ये तो काफी कंक्लूसिव है। यहां उनका घुटना टच हुआ और जो बाउंड्री रोप है वो हिल गई। जहां क्योंकि जो फील्डर हैं कैच गिराए जाने के बाद ये लड़खड़ा गए थे, और ये उसी का असर है। बाउंड्री रुकनी चाहिए थी, लेकिन वाज़े तौर पर इनका जो पाँव है ये लग रहा है इस वक्त आपके सामने। उस ट्रायंगल को दूसरी जानिब गेंद के हाथ को लग रही थी, इसलिए अंपायर इमरान जावेद को आखिर में मुश्किल नहीं हुई। बदकिस्मत रहे यहां पर मूसा, पहली गेंद पर ही उनको विकेट मिल सकती थी। और ये जब आप रावलपिंडी या इस शुमाल में आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, और अगर आप डीप थर्डमैन पर खड़े हैं तो ये कैचिंग पोजीशन होती है। डीप थर्डमैन भी रावलपिंडी जैसी बाउंसी पिच पर, लेकिन तैयार नहीं थे। फैसल अकरम से बेहतर फील्डर यहां खड़ा कर सकते थे कप्तान। बिल्कुल रावलपिंडी की पिच पे हमने पहले भी देखा, बिल्कुल रेगुलेशन कैच था, सीधा उनके हाथ में गया। और फैसल अकरम जैसे फील्डर को जो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, काफी मायूस होंगे अपने आप से। और अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें मैच के, तो फखर का कैच था जो कि यहाँ पे बहुत क्रूशल साबित हो सकता था। आज अच्छे कैचेस यहाँ पर लिए गए यूएमटी मार्कोर्स के, खासतौर पर फील्डर्स ने उनने अच्छी फील्डिंग की। इब्तिदा में नूरपुर लायंस की भी फील्डिंग अच्छी थी, लेकिन इस ओवर के बाद थोड़ा सा मंजरनामा तब्दील हुआ। दोनों तरफ गेंद को स्विंग कर रहे हैं। मूसा लेफ्ट हैंडर को, ये मूसा की नेचुरल लेंथ है, बैक ऑफ अ लेंथ, और स्किडी बॉलर हैं। ज्यादा हाई आर्म इनका एक्शन नहीं है, लेकिन पिंडी पिच पर क्योंकि बाउंस है और थ्रू द एयर ये काफी तेज हैं, ये काफी मुश्किल बॉलर साबित हो सकते हैं।
पहला गेंद जो लूजनर था उस पे अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट की, लेकिन अब अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। फखर जो है वो ट्राई कर रहे हैं। फखर की अगर आप करियर का जायजा लें तो जो उनके आखिरी 3-4 साल हैं उनकी इनिंग्स का ये पैटर्न होता है। वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा टाइम लें और फिर उसके बाद उनके अंदर ये अहलियत है, जो बॉल्स वो शुरू में यूज़ करते हैं उसका अच्छे से वो कवर अप कर लेते हैं। इतनी बड़ी शॉटें, बिग हिटिंग एबिलिटी उनके अंदर है और ऐसा लगता है कि वो फेज़ आ गया 20-21 गेंदों के बाद। अब लगता है कि फखर गियर चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन बॉलिंग अच्छी हो रही है दूसरे एंड से। और शॉट सनसनीखेज, बेदर्दी दूसरा नाम है फखर जमान की बैटिंग का। इस मर्तबा गेंद उन्हें अपने जोन में मिल गई, फ्रंट लेग को क्लियर किया, ऑफ स्टंप के बाहर वो तलाश में थे मौके की, गेंद फुल थी और हल्का सा कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गेंद को मिडल किया और काफी दूर जाकर गिरी, एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छी वुसअत फखर जमान के जो हवा में शॉट्स हैं अब उनमें नजर आ रही है। काफी अपनी फिटनेस पे काम करके आए हैं पिछले चंद हफ्तों में। आखिरी गेंद इस ओवर की और स्लाइस कर दिया, गेंद फील्डर से दूर होती चली गई। जो कैच की तलाश में निकले थे ताहा अच्छा पहुंचे गेंद तक और सिर्फ 2 रन तक उन्होंने महदूद किया लेफ्ट हैंडर को 42 पर 2। सात आशारिया 2 की शराब यहां से दरकार है यूएमटी मार्कोर्स को, लेकिन उन्होंने अब तक 8.4 के औसत से रन बनाए। तो मवाजने में आपको पावर प्ले में आगे ही रहना होता है अगर आप दूसरी बैटिंग में रन चेस कर रहे हो। वही किया है मार्कोर्स ने। बिल्कुल 2 विकेटें गिरी हैं, ये काउंट पे नजर रखनी होगी क्योंकि जिस तरह का विकेट में बाउंस है बॉलर्स के लिए भी मौके मौजूद हैं। वाइड यहाँ पर अच्छी टेक रोहेल नजीर ने की, जो कि स्पेशलिस्ट हैं विकेट कीपर, इन दिनों कम नजर आते हैं विकेटों के पीछे T20 क्रिकेट में, आपको जिनको सही मानों में आप विकेट कीपर कह सकें। बहुत ज़्यादा जोर हो गया कि उन बैटर्स को विकेट कीपिंग करा ली जाए जो कुछ अच्छी फील्डिंग की अहलियत रखते हैं। आज हमने ख्वाजा नाफे को देखा जिन्होंने कीपिंग की UMT मार्कोर्स के लिए, हालांकि बिस्मिल्लाह खान उनके स्क्वाड में मौजूद हैं। एक बार फिर वाइड करार पाएगी और ये अक्सर होता है जब दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज को आप बॉलिंग करते हैं। ये तीसरा ओवर है सलमान का, इससे पहले फखर जमान को कर रहे थे और यही गेंद जो है उनके लिए ये बड़ी मौजू थी, उनके लिए परेशानी का भी सबब बन रही थी। अच्छा मौसम है और यहाँ ये मार्गला के जंगलों की महक है। इस फजा में रावलपिंडी और इस्लामाबाद ये जुड़वा शहर दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है यहाँ पर, और आज लाजवाब मौसम है क्रिकेट के खेल के लिए और ये लाजवाब पिच भी है स्ट्रोक प्ले के लिए। 4 रन मिल गए सरमत को, खराब फील्डिंग इसका सबब थी। लाजवाब आउटफील्ड भी है, बैटर्स को पूरी कीमत उनकी स्ट्रोक्स की मिल रही है यहाँ पर। हालांकि ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं किया था लेकिन गैप में से निकल गई और फील्डिंग आप कह सकते हैं कि बाउंड्री पे ज़्यादा बेहतर एफर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये पेस जो है आउटफील्ड की
ये धोखा दे जाती है काफी फील्डर्स को। और बिल्कुल आखिरी लम्हे पे एहसास हुआ ताहा खो के गेंद उनकी पहुंच से दूर जाती चली जा रही है। कोशिश की लेकिन गेंद को वापस मोड़ने में कामयाब नहीं हुए। और अगर आप पिंडी के मौसम को अच्छा कह रहे हैं तो ये यकीनन बहुत अच्छा मौसम होगा, क्योंकि दिसंबर में अगर तारिक भाई को ठंड नहीं लग रही तो इसका मतलब है कि वाकई मौसम शानदार है। यहाँ ये रावलपिंडी में जब मुझे याद है हम एक वनडे इंटरनेशनल सीरीज कवर करने के लिए आए थे इंग्लैंड पाकिस्तान की, ये बहुत साल पहले की बात है, यही दिसंबर के दिन थे, लेकिन मौसम बिल्कुल ऐसा नहीं था। और शायद ये आज भी हालात तब्दील होंगे। ये दूसरे मैच के आखिर की तरफ जब हम जाएंगे सूरज नीचे आएगा, अच्छा लग रहा है तमाशाइयों को देखकर। यहाँ पिंडी स्टेडियम में ये हमारा कमेंट्री बॉक्स है, इसमें शाह फैसल साहब जो हैं ये काफ़ी लंबा सफ़र करके आए मुत्तहिदा अरब इमारात से, आज सुबह ही पहुँचे। अच्छा एंगल क्रिएट कर रहे हैं राउंड द विकेट सलमान, क्योंकि फखर ढूंढ रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर विथ को और बाजू चलाना चाह रहे हैं। कोई प्रोटेक्शन डीप में नहीं है, पावर प्ले से पहले का आखिरी ओवर है, लेकिन एंगल और उसके अलावा पूरा दिन हमने आज देखा है कि ये जो बाउंस है इसने बैटर्स को काफ़ी परेशान किया है। जो खुल के स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश है उसमें ज़्यादातर गेंदें बल्ले के ऊपरी हिस्से पर जाके लगी हैं। यही कुछ हुआ नूरपुर लायंस की बैटिंग लाइनअप के साथ, इसलिए इस स्कोर में भी फखर की विकेट की बहुत अहमियत है। अगर किसी तरह लायंस उनको आउट करने में कामयाब हो जाए। और फिर से यहाँ पर मौका है और ये फील्डर कैच इस बार नहीं गिराने वाले थे, वहां पर फैसल अकरम थे, उनने मुदावा कर दिया अपनी पिछली गलती का जो मूसा की गेंद पर की थी। ये खासी वॉबल करती रही, आखिर में खासा लो लिया उन्होंने, लेकिन सब बखैर अगर अंजाम बखैर। बिल्कुल मिस जज कर गए थे। बहुत ही ब्राइट दिन है रावलपिंडी में, तो ये वाइट बॉल है, जब ये ऊपर जाता है हल्के से सफेद बादल भी मौजूद हैं तो बॉल को लाइन अप करना बहुत मुश्किल है। यहां भी आप फैसल अकरम को देखें, इस तस्वीर से आपको अंदाजा होगा काफी लो डाउन लिया, लेकिन जब बॉल के साथ उठे तो चेहरे पर मुस्कुराहट और इत्मीनान, क्योंकि ये बड़ी विकेट थी। और अब इस मैच का रुख बदलने का इम्कान है, क्योंकि फखर जमान डेंजर मैन मैच विनर आउट होकर वापस जा रहे हैं 28 रन बनाकर। यूएमटी मार्कोर्स 49 पर 3। कप्तान आए हैं इस वक्त बैटिंग क्रीज पर। 267 मैचेस, 5000 से ज़्यादा रन्स, ये अच्छी औसत है T20 के लिहाज से। 160 औसत और जो इनका स्ट्राइक रेट है उसको मिलाकर वो 160 वो जो बसरा कहलाता है वो 160 ये T20 में अब से 5-7 साल पहले तक ये अच्छा समझा जाता था 160 का बसरा, लेकिन जाहिर है अब म्यार बढ़ गया इससे। बिल्कुल, और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त जो मिडिल में दोनों बैटर्स हैं, इफ्तिखार और समद, दोनों एक ही तरह के बैटर हैं, मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। इफ्तिखार ज्यादा एक्सपीरियंस हैं। गेंद निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। थोड़ा सा अपनी लाइन में चूक गए और इफ्तिखार ऐसे तोहफों को कबूल करने में महारत रखते हैं। यहाँ पर लेग बाई के 4 रन के साथ 50 रन मुकम्मल हुए यूएमटी मार्कोर्स के। और ये अच्छी खबर है, दोनों टीमों ने ही आज 50 से ज्यादा रन बनाए पावर प्ले में। गो की विकेटें गिरी हैं, लेकिन रन बनाने पर समझौता नहीं किया। फखर जमान जो हैं ये अपने स्ट्रोक प्ले पे आज समझौता नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार उनकी वजह बिगड़ गई। जैसे ही बाहर निकले तो गेंद जो है उन पे और ज्यादा तेज हो गई इस पिंडी की पिच पर।
सलमान आखिरी कहका उन्होंने लगाया और कहा जाता है कि भाई सबसे ऊंचे कहके लगाते हैं जो आखिर में कहके लगाते हैं 53 पर 3। जाहिद महमूद लेग स्पिनर यहाँ रावलपिंडी में इन्होंने अपना टेस्ट करियर शुरू किया था इंग्लैंड के खिलाफ। अभी हाल ही में ये एक बार फिर खेले थे, इन्होंने आखिरी टेस्ट मैच भी यहीं खेला था रावलपिंडी में ही इंग्लैंड के खिलाफ ही, और शायद उन्होंने अपनी तमाम टेस्ट क्रिकेट ही इंग्लैंड के खिलाफ खेली है। मूसा को यहाँ पर खासी अपील की, देर तक अपील करते रहे लेकिन गेंद पैड को ही लगती हुई गई थी। वही वो पहाड़ को राई, या कह सकते हैं राई को पहाड़ बनाने की कोशिश थी फील्डिंग टीम की जानिब से। ये नेचुरल मूवमेंट है जो मूसा को मिलती है अंदर की जानिब, इस मर्तबा लाइन में छू के, लेकिन कप्तान ने उनको प्रोटेक्शन दी, बल्कि अटैकिंग ऑप्शन दिया। एक स्लिप में फील्डर आ गए हैं मूसा के लिए। अच्छी कप्तानी इमाम की, क्योंकि यहाँ वो सेंस कर रहे हैं कि प्रेशर है मारखोर पर। अगर इन दोनों बिग हिटर्स को यहाँ आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो हदफ को मजीद मुश्किल बनाया जा सकता है। अच्छी सी मूवमेंट जल्दी करनी पड़ी अब्दुल समाद को, जो आज मुख्तलिफ किरदार में आए हैं, और उसकी वजह ये जल्दी विकेटों का गिरना था। ख्वाजा नाफे उनका दिफा चैलेंज हुआ इस पिच पर, पहली गेंद पर आउट हुए। उसके बाद पावर प्ले का अच्छा फायदा उठाया फखर जमान ने, लेकिन मोहम्मद शहजाद उनकी वजह बिगड़ गई। क्रीज से बाहर निकलते हुए फखर जमान का ये दिल का शॉट था, बिलाशुबा ये शॉट ऑफ द डे था, ये फखर जमान ने लगाया। जितना इस पैकेज में हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा बाउंस है, जरूर ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या बैटर्स ने थ्रू आउट द मैच अच्छे एरियाज को चूज किया रन स्कोरिंग के लिए, अच्छे ऑप्शंस का इंतखाब किया, क्योंकि जितने भी बैटर्स आउट हो रहे हैं वो ज्यादातर आगे बढ़कर बॉल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टीपलिंग बाउंस जो है वो उसके ऊपर हावी आने में कामयाब नहीं हुए। हमने ज्यादा हॉरिजॉन्टल बैट स्ट्रोक्स देखे नहीं, कट और पुल देखे नहीं, जो किस तरह की ट्रू बाउंस पे एक बेहतर स्कोरिंग ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप ऐसी विकेट पर ज्यादा आगे निकलकर गेंद की तरफ जाएंगे तो वो रफ्तार जो है, अगर एक बॉलर की वो 135 है तो आप उसको 140 142 बना रहे हैं और खुद को मुश्किल में ज्यादा गिरफ्तार कर रहे हैं। अभी तक यहाँ एतमाद है मार्कोर्स खेमे में मिसबाह उल हक की जो क़यादत में रावलपिंडी पहुंचा हुआ है। ये काफिला फाइनल खेला था यूएमटी मार्कोर्स ने चैंपियंस कप का, बैरियर टाउन चैंपियंस कप का वनडे टूर्नामेंट में, जब इनको शिकस्त हुई थी गैर मुतवक्के तौर पर। और ये कैच तो ना था क्योंकि बम बॉल था। अच्छी पावरफुल ड्राइव थी, जोरदार शॉट था इफ्तिखार का, लेकिन न सिर्फ पिच में बाउंस है बल्कि जो स्क्वायर में भी बाउंस है। आप देखिए कि फील्डर को अपने बाएं जानिब दाएं जानिब तकरीबन उछल कर गेंद को रोकना पड़ा, टिप्पा लगते हुए गेंद गई थी, लेकिन ये स्क्वायर में जो हार्डनेस है उसका मजीद सबूत था। ये ये जो बॉलर्स हैं इनकी फील्डिंग जो है इस पर काम करना होगा। ये जो कोचेस हैं ये हम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देख रहे हैं। पाकिस्तान की जो इस वक्त इंटरनेशनल टीम्स खेल रही हैं बैरून मुल्क, मिसबाह उल हक, एजाज अहमद जूनियर, बड़ा तजुर्बा है इनके पास कोचिंग और खेलने का।
तो ख़ास तौर पर जो बॉलर्स हैं, खा वो स्पिनर्स हों या फास्ट बॉलर्स, इनकी फील्डिंग पर काम करने की ज़रूरत होगी। ये बहुत बड़े नाम हैं, सारे अजीम वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक। एक रन के साथ ओवर का इख्तिताम होगा। अच्छा ओवर था मूसा का ये। 7 के बाद यूएमटी मार्कोर्स 57 पे 3। $57 for 3. 3 wickets lost inside power play. नवाज, सरवर आफरीदी, इनकी जो बैटिंग लाइन है उसमें अच्छी खासी गहराई है। और यहाँ शाहिद अजीज़ जो ऑलराउंडर हैं, आज एक छक्का लगाया था। और इनके बारे में जो यहाँ नूरपुर लायंस का खेमा है, वो इनको बहुत हाई रेट कर रहे हैं। ये फाटा से आए हैं और हाल ही में कायदे आज़म ट्रॉफी के भी मैचेस में दिखाई दिए थे। उनका ये ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छी हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मीडियम फास्ट मीडियम बॉलिंग कर सकते हैं। और अगर वकार यूनुस खेमे से ये ऐसी सोच है तो जाहिर है कि इन पर बड़ी नजरें रहेंगी। और यहाँ विकेट कतई तौर पर मुश्किल पेश नहीं आई। एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। समद, उनका सर ऑफ साइड में चला गया था, लेग साइड में खेलते हुए, और इसकी बड़ी कीमत अदा की। इस तरह की बाउंसी पिच पे अक्सर बैटर अपना वेट ट्रांसफर करने में कामयाब नहीं होते। जाहिर है पीछे के बॉल का सोच रहे होंगे समद। आप देखिए बिल्कुल आगे गिरा हुआ गेंद था, अपनी शेप खो बैठे और विकेटों के बिल्कुल सामने शाहिद को पहले ही ओवर में बड़ी कामयाबी मिली। समद वापस हुए सिर्फ 6 रन बनाकर। यूएमटी मार्कोर्स 58 पर 4। फ़खर जमान के सिवा ये दूसरे लेफ्ट हैंडर हैं। मोहम्मद नवाज मार्कोर्स की बैटिंग में 8वें ओवर में ही उन्हें खेलने के लिए आना पड़ा। शाहिद अजीज़ कारगर रहे। अपने पहले ही ओवर में वो गेंद मूव करने में कामयाब हुए और विकेट उनके हाथ लगी है, इसलिए हौसले अब बुलंद हो गए। ये और जुर्रत दिखाएंगे अपनी बॉलिंग में भी। और मैच में सिचुएशन भी बेहतर हो गई इनकी टीम की, क्योंकि जिस तरह मैं कह रहा था कि इफ्तिखार और समद हार्ड हिटर्स हैं। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में काफ़ी ये मुस्तनद हैसियत रखते हैं यूएमटी मार्कोर्स के लिए। उसमें अब डेंट डाल दिया है। अब नवाज और ऑलराउंडर्स ने आना है। नवाज तो खैर बहुत ही बासलाहियत बैटर हैं, लेकिन जो विकेटें आपको मिलती रहती हैं एज अ बॉलिंग यूनिट, आपके हौसले बुलंद रहते हैं। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर लेफ्ट हैंडर को भी पहली गेंद बिल्कुल पैसे पे गिराई, जिसे बमुश्किल टाल सके। गेंद अंदर की तरफ मूव हुई और इनकी तवक्को से ज्यादा तेज आ गई, स्किड करती हुई पैड पर लगी। अच्छा फैसला अंपायर जान की जानिब से। बिल्कुल अपना तवाजुन खो बैठे अब्दुल समद।
शाहिद की एक्यूरेसी और इसके अलावा जो मूवमेंट है, जैसा आपने कहा पहली गेंद लेफ्ट हैंडर को भी उन्होंने बिल्कुल सही जगह पर गिराई, ना सिर्फ सही जगह पे गिरी बल्कि मूवमेंट भी हुई। आप बात कर रहे थे नूरपुर लायंस के मेंटोर वकार यूनुस की, जाहिर है वो फास्ट बॉलिंग पे बहुत गिरफ्त रखते हैं। फास्ट बॉलिंग टैलेंट आइडेंटिफाई करना और फिर उनको पॉलिश करना, ये काफ़ी उनसे ज़्यादा मंसूब है। और उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ भी बॉलिंग कोच के रोल में काफ़ी काम किया और काफ़ी सारे जो उन्होंने फास्ट बॉलर्स की ग्रूमिंग और पॉलिशिंग की है। पिछले जो चैंपियंस कप हुआ था, बैरेट टाउन चैंपियंस कप, जो 50 ओवर का था, वहाँ भी हमने देखा कि सिराजुद्दीन इनके पास थे और अब सिराजुद्दीन पाकिस्तान शाहीन्स का हिस्सा भी बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है और अपॉर्चुनिटी है इन यंग फास्ट बॉलर्स के लिए कि आप वकार यूनुस जैसे ग्रेट्स के साथ काम करें और उनसे सीखने का काफ़ी मौका मिलेगा। फास्ट बॉलिंग का टैलेंट पाकिस्तान में बेतहाशा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हर लेवल पर आप देखें, अभी सर आपने जिक्र किया कि हम पाकिस्तान अंडर 19 को भी देख रहे थे मुत्तहिदा अरब अमारात में, वहाँ भी जो फास्ट बॉलिंग का क्वार्टेट था पाकिस्तान के पास, जो 4 फास्ट बॉलर थे, बहुत ही मुतासिर कुन थे। यहाँ आमिर यामीन ने नई बॉल के साथ इम्पैक्ट डाला और ख्वाजा नाफे को चलता किया। एक मरतबा फिर बाउंस होती हुई गेंद के खिलाफ ऐसा लगा कि गलत ऑप्शन का इंतखाब किया बैटर्स ने। ये थे शहजाद और अब तजर्बाकार फ़खर जमान भी चार्ज करते हुए आउट हुए। उनका कैच छोड़ा पहले फैसल अकरम ने, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने मदावा किया और समद बिल्कुल भी समझ नहीं सके फुल लेंथ बॉल को शाहिद की। हवा में थी, मुश्किल पार किया एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को और उसके बाद बाउंड्री तक जा पहुंचे मोहम्मद नवाज। खतरों से खेला उनने पहली गेंद पर और उसका सिला भी मिला। सिला जरूर मिला, लेकिन बॉल कैचेबल हाइट पे गई 30 गज के दायरे के अंदर से और ये खतरनाक साबित हो सकता है। थोड़ा सा फील्डर की पहुंच से दूर था। ये आज हमने देखा है कि जो भी बैटर्स आए हैं उनकी इंटेंट पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अटैकिंग क्रिकेट खेलने की तरफ गए हैं ज्यादातर बैटर्स। और इस बार फ्लैश या ऑफ स्टंप के बाहर और अच्छी खासी यहां पर ढील मिल गई थी मोहम्मद नवाज को और उनने बैक टू बैक चौके लगाए। ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। इस मर्तबा उन्होंने बैकफुट पर रहकर गेंद की पेस और बाउंस का इस्तेमाल किया और काफी तेज हाथ चलाए। बैट स्पीड बहुत ही जबरदस्त थी, जिसकी वजह से फील्डर के पास बिल्कुल कोई मौका नहीं था ये गेंद रोकने का। अभी तक राइट हैंडर को हमने शायद अजीज को गेंद बाहर निकालते हुए नहीं देखा, तो इसके मानी यही है कि लेफ्ट हैंडर को ये एंगल के साथ ही इन गेंद उस तरफ जाएगी, इसलिए ये अराउंड द विकेट भी आ सकते थे, लेकिन फिलहाल इसी तरफ रहना चाहते हैं और फिर दूसरी तरफ निकल गए। दोनों तरफ बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, लेफ्ट हैंडर के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहे शायद। बिल्कुल, और जब बैटर इस इंटेंट के साथ आएंगे और वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे वापस, तो ऐसा हो सकता है। शाहिद का जो नेचुरल बॉल है वो अवे स्विंगर है राइट हैंडर के लिए, तो पहला गेंद तो उन्होंने टारगेट पे किया लेफ्ट हैंडर को, लेकिन अब जो है उनकी लाइन चूक गई है। डॉट के साथ ओवर का होगा इख्तिताम 8 के बाद 67 पर 4। Lovely early afternoon in Rawalpindi. This is Saturday and we are expecting a photo finish with this curtain raiser coming towards its business end. Nurpur Lions are trying to make the most out of it. All fast bowlers so far. Amir Yamin started the proceedings, 1 wicket for him, and Salman bowled his heart out.
3 overs, 19 runs, couple of wickets for him. Shahid also got his hurrah. So they are looking good so far, 4 fast bowlers, and now we'll have to wait and see that how this tail, which is now going to be exposed sometime sooner rather than later, how they will be able to wag against this all-pace attack. Yes, it's been all pace so far, and a couple of exciting prospects, and they have people coming in watching them, and definitely this is another motivating factor when you have the crowd and people coming in to watch you. Just gives you that extra kick. And we saw Salman bowl his heart out, bowled well, bowled with good pace, has good height. And this is Musa, who's also known to bowl very quick. And at the moment, the match is pretty much even Steven, 68 for 4, the UMT Markhors. They have lost wickets, and all once again no shortage of intent, but the shot selection certainly question mark over that. And that is something which definitely we will see getting better as the tournament progresses. Early days, Bahria Town Champions Cup T20 2024, and it's up to Nawaz, the experienced Nawaz and Iftikhar. This pair, loads of international experience they carry. And once again uses the pace, short and wide, but goes straight to the third. Lengths have been shorter. This is a definite ploy from both the teams so far. The fast men have fancied bowling short. Salman, we often talk about nature versus nurture, especially for the fast bowlers. There is a traditional or the natural style of bowling which the coaches tend to mold with the requirements of the game, or depending upon the workload, that how much they are going to work around. He's got a very long run up. He comes in hard and gets the momentum, and in that load up he delivers the ball. You see that could be changed or altered, or the nature is the best thing to go about, whichever has been the natural way of bowling. Well, this one is cut, and dive from the field over there. He makes good ground and good effort to save the boundary. 2 runs to the UMT Markhors. Iftikhar moves on to 7 now. And coming back to your question regarding bowlers with actions that vary, and not all of them are repeatable. So it depends who you are working with. Some coaches believe in altering the actions. They're fond of biomechanics and things like that. And others would like to keep your uniqueness. If you can bowl the right areas with good pace and be unique, then why not? And any areas which are likely to get injured, you can make them stronger as well. So basically different schools of thought, and it depends which coaches you're working with and for what length of time. Once again, couple of runs to Iftikhar, who hasn't looked comfortable so far. Yeah, in that process there was 2 pieces of fielding which were quite in contrast to each other. The previous one was a lapse, and this one Salman covered a lot of ground and almost saved a certain boundary. Almost, I'm saying, because they are going upstairs to check it again, and by the look of things he has done perfectly all right and ticked every box other than this. If there is another angle, they could use that one, or otherwise, with the benefit of the doubt, which should go towards the fielder. Yes, it has gone. That could save a boundary. Iftikhar and Nawaz, both of them trying to get into the double figures. Single to end the over. Over number 9, UMT Markhors are now 74 for 4. This is Super Saturday in Rawalpindi. Buy one, get one on offer.
as Lake City Panthers will also be taking on Light Bank Stallions, which would be starting 3:30, which is just a couple of hours away from now. Lake City Panthers, remember, they won the one-day cup in Faisalabad, so expectation would be high from that young-looking team, especially with the captaincy of Shadab. And not to forget, they've got a youngster leading the Light Bank Stallions. Yes, talk about Shadab and young side, and here comes another youngster to take on the attack. Faisal now, Faisal Akram, just recently coming off from the national side, and he's played 16 games so far, 7 wickets and average of 49. Definitely, he would love to see lots of improvement and all that, but we all know that he's very talented, and there is a decent start. Just pushed towards long on for an easy one. And it would be interesting to see if we can find out how many wickets today have fallen to the short ball, because this area has been an area of vulnerability for most of our batters. And this is something what the mentors can work on, because it has been there for quite some time now. Faisal Akram was among the success story in Bulawayo. We got 3 wickets in his first one-day international and got a wicket apiece in the next 2 games against Zimbabwe. He now has the taste of the international cricket. Shajil, who has been there and thereabouts, would be ready to go. Lake City Panthers is now looking strong with Shajil joining inside. Got experience, but the question would be that could he still continue in this shortest format? Iftikhar on the other side has got different ideas. He is known to be a better batsman against spin bowling, and with young Faisal Akram on the attack, the first spinner being introduced by Nurpur Lions, we'll have to wait and see that how long they are going to respect him. They need another 74 from 62 deliveries, so they're not short of time as such. Well done, Shabash. Dot ball this time. Faisal bowling the wrong one. Carried straight on, and Nawaz didn't find any room to time it to his liking. So Nurpur Lions will need wickets at regular intervals. And UMT Markhors would definitely love a bigger partnership. So the game is on, and many exciting encounters to come in this tournament. The Barrier Town Champions Cup T20 2024. As this one is worked around, and halfway through now, the UMT Markhors are 78 for 4.
runs on 16 deliveries. Fakhr started well. He tried to play some big shots through the covered region, but then came his brutal shot down the ground, and that drafted shot which brought the ball right on the onside. Finally exploited the gap which was given on the covers. He also got a chance on the third man on the first ball of Musa, and this was a crucial moment in the game. Faisal Akram kept his eyes on the ball coming down from the blue skies of Rawalpindi, and in the end completed it perfectly. 2 wickets for Salman, a memorable afternoon for him so far. Amir Yamin and Shahid got a couple of them. And since the loss of Fakhr Zaman, there has been a steady partnership in progress. Iftikhar, the action man, the captain, has contributed with 12 runs so far. And Nawaz got a couple of boundaries, 11 runs of 9 deliveries. So after the drinks break, they got the fast bowler and they got the prize. Nawaz played in the air. What an afternoon for Shahid. He got the prize wicket of experienced Nawaz, cramped him for room. He paid the price, Nawaz, and half of them are back in the hut, Markhors. Yes, front foot check, and it's perfect. Once again, the ball was on the shorter side and we had width on it. When Nawaz saw the ball, his eyes lit up. It had stroke written all over it, but stroke it straight to point. And he'll have to leave now. And Nawaz, after hitting a couple of good blows, has to go. 11 he got of 10. And it's now 5 down for the UMT Markhors. And the score is on 78. Sarah Afridi is now replacing Nawaz to steady rocking ship of UMT Markhors. Got a lot of experience for him, 25 matches, but not too much to talk about in terms of the runs, but a useful and a handy all-rounder. Wherever he gets the chance to play, he will have to play the second fiddle along with his captain Iftikhar. Got a slip in place. There is a spring in the step. Shahid comes in. And then once again a good delivery. He wanted to go on the other side right on the very first delivery, but brilliantly bowled by Shahid. Cramped him for room, played in the air. Nawaz, who was looking good, but played right in the hands of the fielder. No problem for him whatsoever. So the problem with short ball continues, Salman. Well, yes, the shot was on indeed, but didn't control it to the full effect. Hit it in the air and straight to the fielder. So neither the direction was controlled and neither the ball going in the air straight to the fielder. And Nawaz departed. Now it's up to Sarwar and Iftikhar. Sarwar can bat a bit. And Iftikhar will have to make sure that he's around till the time his team gets over the line. And happy captain over there. Imam thinks his team is in, and surely is. They halfway through, they have 5 wickets down, and the top 5 batters back in the hut. So, good captaincy this, keeping the field on the offside, in the ring, keeping a slip, looking to take wickets. And that's the way they're going to win. There is no other way for them. And you got to applaud and appreciate the captaincy of Imam. He's kept the catching options there, even at halfway stage. In T20 cricket, we normally see captains have defensive fields, but this is the right way. That remained in the air, but in the fraction of a second landed. Good afternoon this has been so far for Shahid. He bowled brilliantly in the Kadazam Trophy also, playing for Fata, and got 7 wickets in one game against Era Murar Jamali. Also against Blues, he was a part of the game but could not contribute significantly. Game against Quetta got 5 wickets.
So this would be a question mark that how these mentors are going to make use of the bowling options, especially which are available into managing their workload. Yes, at the moment, worrying times for mentor Misbah, the mentor of UMT Markhors, as the bowler steams in, and this time defensively played. Dot ball to finish. It's 11 overs bowled, and UMT Markhors are 78 for 5. Laid back Saturday afternoon in Rawalpindi. You can come one, come all. There is another game to follow, and today will be followed by some single games throughout the week, which will go on until Thursday. And this time, this is a big shot by Iftikhar, typical for him, slog sweep, and into the stands. Enough is enough, says Iftikhar, and welcomed for this over Faisal Akram with a 6. Well, this is huge. This is out of the ground. He really got hold of this one. Faisal Akram looking to give the ball the air, but choosing a wrong batter to do that too. And it was in the arc for him. And maximum is the result. Just needs to stay around, pick the odd boundary, take the single, and build a partnership. And this is something what we haven't seen today from either of the teams so far. Once again, he tries to go big, but he's in no position. Head is way too high, and the body position is not where it should be while you're looking to go big. And this is where this hitting technique matters so much. This is usually said for a captain or the main batter of team that he's going to be crucial, but this is exactly what is happening with UMT Markhors. If they are to lose the wicket or if they would not be left with a lot many batting options. Saad Masood, the youngster, along with Akif Javed and Imran Jr. This time you played in the air. 3 fielders are trying to converge, but no one will be able to grab it. It's a tightrope for Iftikhar to walk, but he has now eventually decided to go big. Yes, the intent is right to go after the spinner, but the shot selection isn't ideal. This one is turned away for an easy single as 12 overs are completed, and UMT Markhors are 88 for 5. अठासी 5 खिलाड़ी आउट. ऐसा सोचा तो ना होगा यूएमटी मारखोर ने जब ये रन चेज शुरू हुई थी कि इस तरह बुरी तरह इनकी बारी जो है वो डगमगा जाएगी. 2 विकेटें सलमान ने हासिल की, 2 विकेटें शाहिद ने. क्रूशल फेज है. फैसल अकरम बॉलिंग कर रहे हैं. छक्का जरूर उन्हें लगा पिछले ओवर में, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की उन्होंने. अच्छा बाउंस मिला यहाँ पर शाहिद को. ये मिडिल ओवर्स में इन्होंने बड़ी खुश उसलूबी के साथ अपना किरदार निभाया है. जो दोनों इनके मिडिल ओवर्स के बॉलर थे, ये अच्छा क्रीज को हिट किया था शाहिद अजीज ने, फैसल अकरम, और दोनों ने मिलकर ये 5वां ओवर है इस पार्टनरशिप का, और अब तक इन्होंने सिर्फ 24 रन दिए हैं, 2 विकेटें हासिल की हैं. फैसल अकरम ने भी दूसरे एंड पर
वो जो दबाव है उसको हटने नहीं दिया। फिर से आउटसाइड एज लेग साइड में खेलने के लिए गए थे सरवर आफरीदी। हार्ड हिटर्स को भी ये पिच ज्यादा रास आई नहीं। शाहिद अजीज, बहुत ही खूबसूरत इनका रनअप है, काफी बैलेंस्ड, पंपिंग ऑफ द आर्म्स और बहुत ही स्टिल हेड है, लेकिन इनका जो लोड और रिलीज है बहुत ही आला है। अच्छी रिस्ट पोजीशन है इनकी, ज्यादा तवील कामत नहीं है और ज्यादा बड़ा रनअप भी नहीं है, लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है और बहुत ही सिंपल रिपीटेबल एक्शन है इनका। अच्छा खेला इफ्तिखार ने। और जो हम बात कर रहे थे पहले के इस विकेट पे बहुत ज़्यादा हमें हॉरिजॉन्टल बैट स्ट्रोक्स देखने को मिले नहीं, कट और पुल शॉट। बैटर्स ने जो ऑप्शंस ली वो अटैकिंग शॉट डाउन द ग्राउंड खेलने की, इसमें उन्हें कामयाबी हुई नहीं। इस ओवर की भी पहली गेंद जो कि तकरीबन शॉर्ट और वाइड थी, लेकिन सर्वर उसका फ़ायदा उठा नहीं सके। कहीं ना कहीं बैकफुट प्ले पे आपको अच्छा होना पड़ेगा इस पिंडी पिच पर। जी हाँ, और जो बल्लेबाज हैं उनको अपना जो कंफर्ट जोन है ये फ्रंट फुट पर जो आसानी के साथ आप लाहौर कराची में जाकर खेल सकते हैं, ज़रा सा उससे निकलने की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे आप शुमाल की जानिब आते हैं यहाँ विकेटों में बाउंस और रफ्तार बढ़ जाती है। एबटाबाद में अभी हालिया कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस में भी कई बल्लेबाजों के साथ ये मसला रहा है। रावलपिंडी में शोएब अख्तर स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम में इस दफ़ा अच्छी खासी क्रिकेट हुई है। और अगर आप देखें दोनों टीम के बैट्समैनों की जानिब तो हसन नवाज एक वाहिद बैटर थे जो बाउंस को अच्छा राइड करने में कामयाब हुए। तवील कामत थे, रन उन्होंने 23 बनाए, लेकिन अच्छे स्ट्रोक्स उन्होंने खेले। ये देखिए सरवर एक मरतबा फिर वो फ्रंट फुट क्लियर करके आप जो है वो बड़ी शॉट काउ कॉर्नर में लगाने की कोशिश की, बिल्कुल टो एंड पे जाके लगी बल्ले के। यही अगर बॉल का बाउंस नीचे की जानिब होगा तो आप ऐसे शॉट ज्यादा कनेक्ट कर सकेंगे। फील्ड में तब्दीली हुई है, ऑफ साइड से फील्डर निकाल के मिड विकेट पे बिल्कुल दायरे के ऊपर रख लिया है कप्तान ने। तो आखिरी गेंद और इससे फुल टॉस बना लिया। इस बार अच्छा वार किया, लॉन्ग ऑन से दूर 4 रन के लिए। पहला चौका सरवर आफरीदी का 13 ओवर के बाद 94 पे 5। शाबाश शाबाश फैसल। रावलपिंडी हमेशा से जाना जाता है तमाशाइयों के जोशो जज्बे के लिए। क्रिकेट मैदानों में एक ज़माना था जब यहाँ साइड मैचेस हुआ करते थे। उस वक्त इतनी ज़्यादा बैनुल अक़वामी क्रिकेट नहीं खेली जाती थी रावलपिंडी में, और ये शौक जो है उसी दौर से है। तो पहले पिंडी क्लब ग्राउंड साइड मैचेस वहाँ हर बरस हुआ करते थे। एक रिवायती जो टूर ओपनर हुआ करता था वो विजिटिंग टीम का प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि उसी तरह का एक मैच था जिसमें वसीम अकरम पहली दफा स्क्रीन पर नजर आए। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया, मैच में 9 खिलाड़ियों को, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बड़ी रिवायत हुआ करती थी वो। और पिंडी क्लब ग्राउंड पे टूर ओपनर होता था, सीजन ओपनर भी अक्सर होता था इंटरनेशनल टीमों की आमद के साथ ही। और एक और ख़ास बात ये थी उस रिवायत की कि जो सदर पाकिस्तान होते थे उस दौर में वो आया करते थे। उस मैच में एक दिन ज़रूर उनकी शिरकत होती थी। इसके अलावा जो शहर के जो अमायदीन और बड़ी शख्सियात उस मैच को वो 4 चांद लगा देती थी। और यहाँ सरवर आफरीदी इस इनिंग्स को 4 चांद लगा रहे हैं।
ये शानदार छक्का उनने लगाया और ये मशहूर हैं बड़े शॉट खेलने के लिए। ये फ्लाइटेड गेंद और हाथों हाथ लिया इसे आफरीदी ने। इस मैच में मिडिल ऑर्डर बैटर्स का किरदार जो है वो काफी अहमियत का हामिल है। 13 ओवरों के बाद इक्वेशन बिल्कुल बराबर थी दोनों टीमों की। यहाँ ऐसी बैटिंग की जरूरत है सरवर आफरीदी की जानिब से जैसे अवैस ने की नूरपुर लायंस के लिए। बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है, 101 पर 5 और यहाँ अपॉर्चुनिटी या मौके के लिए तैयार रहना होगा फील्डिंग साइड पे, क्योंकि यहाँ अब गलती की गुंजाइश नहीं है। इतना टाइट कॉन्टेस्ट ये चल रहा है। यहाँ ये फैसल अकरम ने अच्छी कोशिश की थी। यहाँ पर ये थोड़ी देर तक हवा में रही थी और खासी तेज लगी है इनके हाथ पे। फैसल अकरम आज बाउंड्री पर एक कैच गिरा चुके हैं। बाद में फखर जमान का एक कैच इन्होंने लिया था और ये भी इनके पास मौका था। ये होना चाहिए था कि इंटरनेशनल जो बॉलर हैं उनसे आप तवक्को करते हैं कि वो ऐसे कैचेस दें और इन दिनों बहुत कैचेस आ रहे हैं, रिटर्न कैचेस स्पिनर के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में जब से ये बल्ले बड़े हुए 104 पे 5। छब्बीस रन की अच्छी पार्टनरशिप। ये दो मोहतबार बल्लेबाज हैं, इफ्तिखार और सरवर आफरीदी इस वक्त विकेट पर मौजूद, क्योंकि मुश्किल हो गई थी 78 पर जब 5वीं विकेट इनके हाथ से निकली थी। उस वक्त इनिंग्स डगमगा गई थी और अब इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए वापस मोहम्मद सलमान को लाएं जो स्ट्राइक बॉलर हैं। लाहौर के लिए अच्छी बॉलिंग की है इस साल इन्होंने कायदे आज़म ट्रॉफी के मैचेस में लाहौर वाइट्स के लिए। लाहौर वाइट्स की टीम के लिए ये विकेटें लेते रहे और यहां पर भी एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया। अंपायर के सामने सवाल था कि क्या गेंद जो है बल्ले से तो नहीं लगी। सरवर आफरीदी ऐसा तासुर दे रहे हैं, लेकिन ये हतमी फैसला है इमरान जावेद का, इसलिए जाना होगा। हतमी फैसला है। थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज भी गए थे, शायद एंगल देखना होगा क्या एंगल क्रिएट किया। यहाँ तो मसला नहीं है, अंदर आती हुई गेंद थी, बैक लेग पर जाकर लगी। गेंद ने ज्यादा फासला तय नहीं करना था। अंपायर इमरान जावेद ने पिंडी की विकेट के बाउंस और एंगल को देखा और उसके बाद उंगली फिजा में बुलंद की। सरवर आफरीदी को भेजा वापस, 16 रन बनाए। यूएमटी मार्कोर्स 104 पे 6। दोनों टीमें बिल्कुल शाना बशाना इस वक्त चल रही हैं। 106 पर नूरपुर लायंस ने अपनी 6ठी विकेट गंवाई थी, यही काम किया है यूएमटी मार्कोर्स ने 104 पर। साद मसूद आज अच्छी लेग स्पिन बॉलिंग इन्होंने की। अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं T20 करियर में, नौजवान हैं। अच्छी डिलीवरी से उन्हें खुशामदीद का पिच पे सलमान ने। एंगल से बॉल अंदर आती रही लेकिन पड़ने के बाद सीधी हुई और बाहर की जानिब निकल गई। साद को बिल्कुल पता नहीं लगा। ये बॉल अलबत्ता एंगल से भी अंदर आई और पड़कर भी अंदर आई। इसकी लाइन को कवर करने में नाकाम रहे। अंपायर ने सोचा बाउंस के बारे में, लाइन के बारे में और फिर सर के इशारे से इस चीज का इजहार किया कि आउट है। आज 13 विकेटें गिरी हैं, उनमें से ये महज दूसरी थी जो कि ये कैच के सिवा जो विकेट थी।
13 में से जो 11 खिलाड़ी आउट हुए वो कैच आउट हुए। और एलबीडब्ल्यू या जो बोल्ड है वो रावलपिंडी में इतना ज्यादा खेल में आता नहीं है। साद ने ये कामयाबी हासिल की, क्योंकि यहाँ आपको एलबीडब्ल्यू करने के लिए गेंद बहुत आगे गिराना जरूरी होता है इस पिच पर, और खास तौर पर जब आपका कद भी मोहम्मद सलमान जैसा हो, लंबा। बिल्कुल, और जो समद का डिसमिसल था जो कि शायद की गेंद पर हुआ था, वो एक ऐसी लेंथ थी जहां से आपको एलबीडब्ल्यू मिलने का चांस होता है। उसके अलावा बाउंस की वजह से बॉल ऊपर से निकल सकता है। एक मरतबा फिर अंदर आती हुई गेंद क्रैम्प कर दिया साद को, और गेंद लगी है साद को। ये आप देख सकते हैं, ये खासी हद तक आगे गेंद थी, लंबे कद के बॉलर हैं, इससे अंपायर ने किसी हद तक सोचा और उसके बाद उन्होंने अपना फैसला वहीं पर सुना दिया। अच्छी कामयाबी, कप्तान जो है वो चाहते थे कि सरवर अफरीदी सामना करें मोहम्मद सलमान का, इसमें उनको कामयाबी मिली। एबीएल स्टैलियंस, उनकी भी आमद है। ये समझ, ये ज्यादा गेंद आगे थी, इसे यहाँ अंपायर कतई मुश्किल नहीं पेश है करार देने में। अगला मैच एबीएल स्टैलियंस जिसमें शामिल हैं आजम खान, वो खेलेगी लेक सिटी पैंथर्स से। दोनों टीमों में कई नौजवान खिलाड़ी हैं, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, 26 खिलाड़ी जो हैं वो अफ्रीकन सफारी पर हैं, और 26 आपके सफ़े अव्वल के क्रिकेटर के बाद जो नया टैलेंट है उसको भी उभरने का मौका मिल रहा है इस चैंपियनशिप में। जी बिल्कुल, और काफ़ी जो लाइनअप है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है इस टूर्नामेंट में भी। पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स हैं, वाइट बॉल सीरीज़ पहले है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद टेस्ट मैचेस हैं, कुछ प्लेयर्स की वापसी होगी। अगला मैच शादाब खान की लेक सिटी पैंथर जो 50 ओवर के चैंपियन थे फैसलाबाद में, एलाइड बैंक स्टैलियंस मोहम्मद हारिस की कप्तानी में उतरेंगे। मेंटोर शोएब मलिक भी इनकी टीम में प्लेइंग स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ये अच्छी बॉलिंग फॉर्म दिखा के आए हैं फर्स्ट क्लास मैचेस में उबैद शाह। T20 में इनके पास एक और मौका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इब्तदाई दिनों में खेले थे HBL PSL 9 में, उसके बाद टीम में अपनी जगह बरकरार नहीं रख सके, लेकिन अब ये ज़्यादा बेहतर एक हमागीर बॉलर, हमाजहत बॉलर बनकर उभर रहे हैं कम उम्री में। होम हीरो ये भी लेग स्पिनर थे शादाब खान की तरह, किस ज़माने में मंसूर अमजद पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल इनने खेला था बांग्लादेश के खिलाफ कराची में। इन दिनों ये हेड कोच है स्टैलियंस के 6 पर 6। पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर बैटिंग में काफ़ी खला है, और
आज यहाँ मिडिल ऑर्डर बैटर्स का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में। इफ्तिखार खेल रहे हैं 23 पर, और इफ्तिखार की जब पाकिस्तान के लिए खेले थे तो रिस्ट स्पिनर्स के खिलाफ काफ़ी उनके खिलाफ प्लान करती थी दूसरी टीमें कि रिस्ट स्पिनर को लाया जाए उनके होते हुए। इस गुगली पर बीट हुए, अच्छी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, अच्छा एंगल भी क्रिएट किया फैसल अकरम ने, हिटिंग आर्क से दूर बॉल की इफ्तिखार की। शाबाश 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 शाबाश। ये ज़्यादा दूर कर दी उन्होंने और इसका खमियाजा भुगता। यूएमटी मारखोर के पास इतनी फयाजी की गुंजाइश है नहीं। और इससे चलता किया लॉन्ग ऑफ से बाला बाला, और ये बुलंदो बाला छक्का इफ्तिखार अहमद का, ये गजब का शॉट था और दोनों के दरमियान जांग मिचोली चाली जारी थी। ये आखिर में लड़ाई जीती है इफ्तिखार ने, उन्होंने दूसरा छक्का लगाया है लेग स्पिनर को। उस हिटिंग आर्क जिसकी बात कर रहे थे, इस मरतबा बॉल उसमें आ गई और इफ्तिखार का जो बैट स्विंग है वो भरपूर स्पीड के साथ और शॉट में भरपूर कुवत। ज्यादा शॉर्ट गेम चाहते थे इफ्तिखार, लेकिन सिर्फ एक ही रन बना सके। कट शॉट पर इफ्तिखार अहमद बड़े नामवर क्रिकेटर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में हमेशा इन रन्स के अंबार लगाए हैं और हाल ही में ये अपनी जगह बरकरार नहीं रख सके पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम्स में, लेकिन अच्छा लग रहा है वापस आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, यही तरीका होता है। तारिक भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क ये है कि इंटरनेशनल टीम्स आपके खिलाफ एक से ज़्यादा प्लान लेकर आती हैं। अगर फैसल अकरम के पास लग रहा है कि एक ही प्लान है कि उनकी हिटिंग आर्क से दूर रखें, दूसरा प्लान ये भी हो सकता है कि उन्हें क्रैम्प कर दें और वहाँ पे उनको चैलेंज करें, लेकिन ऐसा लगता है फैसल के पास प्लान ए ही है और इसको एक्सिक्यूट करते हुए उन्होंने एक छक्का भी खाया और 2 वाइड भी कंसीड की इस ओवर में। लेग स्पिन जो है ये करने नहीं जा रहे इस वक्त, और यहाँ की है और उसका फायदा हुआ। इफ्तिखार अहमद बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे, पाबंद हो चुके थे ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन के ही, गुगली के ही, लेकिन ये वो लेग स्पिन है जिसे पहले चाइना मैन कहा जाता था, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर की। अच्छा ओवर यूएमटी मार्कोर्स के लिए जिसमें 11 रन बने 117 पर 6। It's 117 for 6 and 4 overs remain as Iftikhar holds the key for his side. The captain batting well settled on 31 of 27, and he needs a partner, a stable partner at the other end to see his team home. 34 required of 24. Modern day cricket, the required rate isn't much, but wickets have fallen. This one is short and on the legs. Lucky that the shot didn't go to the boundary. They're going bumper to bumper in terms of the run scoring and also almost in terms of the wickets being lost. Nurpur lines for 1-1 for 7, where UMT Markhors have lost 6 wickets, now gathering 118 runs. They've got all the ingredients of a top finish in this curtain raiser of Barrier Town Champion Cup. Still, if the Khar holds the key, 32 runs of 28 deliveries, he's now looking dangerous. They've got scoring options on the onside. Saad will have to play the second fiddle. Came down the track, and that is scoped and out of the park. What a glorious shot in the end. Picked it up early and played a maximum. Well,
Second fiddle is not the way to go. Saad goes the exact opposite. And he deposits this one over cover for a 6. A much needed one for the side. And that's a pretty decent stroke, a cricketing one. Just have a look at this. And the good thing about this shot was that his head position was still. And the body stayed down while he executed the stroke. And once again, this is big and in the gap. Fielders in pursuit, and the ball will definitely stop, not cross the ropes. Another couple to UMT Markhors, who are now just moving closer towards this target. If Tihar looks impressed with this kind of shots, it will make his job easy, scoring a maximum and then backing it up with another shot, which was almost played too many in the air. But three fielders were trying to converge for that one. The good part was that he was trying to pick the gaps. Still early days in his innings. Finally got to double figures. Amir Yamin continuing. Change of pace and almost did the trick for him. Way outside the off stump, on the borderline almost. But no signal given whatsoever by the umpire. Now they require 25 runs of 20 deliveries. If they could take it deep into the final over, should be a straightforward chase for them. But Akif Javed, Imran Jr. and Saad to come. Nothing much to talk about their batting. So that will be crucial, that how long this partnership is going to continue. Quick single. Yes, Imam was charging onto it, but clarity of mind did the trick for Saad. Thumbs up, both by the captain and the youngster. Yes, good cricket this. You've got a boundary, the important one of the over. Then you've got a couple, 2 singles already, 10 runs off the over, 24 more required of 19. And the balls will come. They would need batters to take advantage of them. And if the Khar is well set. This is once again in the block hole, but well placed. And another couple to the total. So good batting this. 17 overs now completed, and it's 129 for 6. Faisal Akram came on to ball from over number 10, and he has bowled out his quota, giving away 35 runs. He just completed. Also, Salman has completed his bowling unit. He has been the best among the lot, giving away 21 runs and got prized 3 wickets. Amir Amin got 1 over left in his tank. Musa and Shahid also got 1 each. So they have got perfectly worked out. Only this Salman bowling out his quota is going to be some headache for the captain Imam. Well, this might be the very important over in all 3 to come. And this might decide where this game goes. Once again, goes big, over cover. And this is huge. This is 6 maximum. Important stroke this. Takes a lot of pressure off his side and his captain. And he looks mighty impressive, Saad, as he moves to 17 with his second 6. And the team, UMT Markhors, 135. And now the runs required are lesser than the balls. Yes, first time in this innings, finally, they got the required scoring rate of less than 100. A youngster against another came down the track and played in the air. A lot of bottom hand in that shot. Too short this time, and another extra, another ball to ball, and something that will keep raising the pressure off the UMT Markhors side. They've got the boundary now. Common sense has to prevail for them. And if he can have a chance and see the couple of hits that he has hit over cover, his difference from rest of the batters today has been the balance that he has maintained while executing the stroke. Head has been still, the arms perfectly extended, and the body stayed where it was while executing the stroke. And that is the key to hitting big.
Once again, this time slash, but straight to the fielder in the deep. Just the one. This boy looks good. Saad is in control while he's playing the big shots. 14 more required of 16 now. Yes, perfectly explained, Salman. So this is a youngster playing under the captaincy and with the partnership of Iftikhar. 14 runs required of 16 deliveries. This is clearly UMT Markhors' game to lose. Imam, on the flip side, should not lose hope, because with the likes of Akif, Javed, Imran Jr. to come, wicket or ideally a couple of losses for UMT Markhors could still open up the proceedings in the final few deliveries. This is going to be crucial, as mentioned by Salman. The final over would be a formality if they could just continue with the proceeding. 3 fielders on the onside for Iftikhar. Once again, on the leg side, and the fielder making good ground. Good effort for his side. Saves a certain boundary. Saves 2 runs for his team. But Iftikhar and UMT Markhors move closer. 12 more required now after this couple. Just have a look at this. The fielder makes good ground, and he makes sure that the ball stays inside the rope. Young Faisal over there trying his heart out. But this over has already given away 10 runs. And now it's 12 more required of 15. I think they are going for the boundary check, but apparently everything looks all right. There was a lot of Rawalpindi sunshine between the boundary and the ball. Faisal Akram did it perfectly, and I think he was thinking in the back of his mind that it should not have been checked in the first place, but everything looks all right with that. There might be one instance when his feet was touching the boundary, but the ball looked clearly away from him, so you can still see the gap between the ball and Faisal Akram's body. He did everything all right. The other angle might not be the best one to judge and give the final verdict, but a couple of them and the combined decision should go in the favor of the fielding side, Nurpur Lions. This has been a remarkable comeback by Nurpur Lions. Remember, at one point in time they won 106 for 6, and since then it has been a steady comeback. But now, once again, this is UMT Markhors' game to lose. Lot of angles, lot of work. Yes, third umpire, Mr. Kaisar Waheed, making sure that it is fully evident that either the runs are saved or the boundary scored. So by the look of this replay, Faisal has done a good job. I don't know what he's looking for. It's pretty clear that the ball was left behind while Faisal tumbled over and his one of his foot touched the rope, but by then the ball was far away from him. Just have a look at this. At this moment, he leaves the ball away, and then this is the moment when his back foot touches the rope. Yeah, Salman, he must be feeling hard done by. Despite all the hard work, they are having a lot of looks. The final verdict is still to come from the television umpire Kaisar, and by the look of things, it has come, and he saved the boundary. So coming back to the equation, 12 runs of 15 deliveries. So the wicket is all they need. Ideally in this over, could still keep the hopes alive for Nurpur Lions. Well, this is sensible from Iftikhar. This overthrow, but it wouldn't cost them. Nurpur Lions know they need a wicket, so desperate measures. But good intelligent cricket by Iftikhar. Saad is having a wonderful time, so Iftikhar has switched the roles. Now he is the supporting actor and Saad is leading. And this is the way partnerships are built. Whenever one of the two is having a good time, the other one should support him. It's not about being the equal, it is about getting the team through. Once again, played in the air. There's Wackenbridgen. The ball is racing toward the boundary. 2 fielders behind it. Imam ul Haq will have to grab the ball, but a couple of runs added to the total will make the cause easy for Saad and UMT Markhors. So as you mentioned, that this over should be the defining one. And with 13 runs coming off it, a 6 on the very first delivery of the over,
This looks like a formality for UMT Markhors. He's not shying away from playing in the air, but the good aspect has been he's been controlled and clearly aware of the gaps which are being offered through that region. Yes, Musa hasn't bowled ideal line or length for his side. In fact, it's been ideal for the batting side, providing them length to go after. Once again, he's lucky that the batter misses it. Nonetheless, gets the single as 18 overs are now completed and the score moves on to 143 for 6 for UMT Markhors. This could well become the final over of this curtain raiser. 8 runs required. UMT Markhors are looking pretty with 4 wickets still in hand. They were down and out, especially when they lost their 6th wicket. Yes, I believe now there are 5 fielders in the ring, and that has come about as a result of being late with the over 8. And this is something which can cost the fielding side, and it has on this occasion, as the third man has just come up in the circle. And this time Saad goes big, doesn't connect, but just the one to the total. So this is an advantage, and this is where the sides have to be careful while they are bowling to maintain the over 8 and look after that the overs are bowled in time. And this is an aspect which can be difficult to manage, especially if you have 4 fast bowlers bowling for you. And this is exactly what has happened with the Nurpur Lions, who have now have to bear this penalty, bowl with an extra fielder in the ring. And change of pace, a good short ball there. And Iftkhar didn't do much with it, but he doesn't need to. It's only 7 required of 10 balls. So he can have a breather, because Saad at the other end has been splendid. He's 22 of 14. Earlier he bowled well, 3 overs, 20 runs, 2 wickets. So it has been a good game for him all around. And also this platform of Champions Cup T20 2024, the Barrier Town Champions Cup, is a huge opportunity for these youngsters to make a mark. And he certainly has utilized today's opportunity. Yes, talking about his governing champion, this Barrier Town Champions Cup has been phenomenal in the one-day format, and only in the first game we got a couple of youngsters performing, especially Saad, who has been a local boy, just played 1 T20 game for Peshawar Zalmi, could not perform much, but with the bat he has been phenomenal. Started with a supporting role with Iftkhar. Iftkhar down on one knee and played in the gap. This will settle the issue. Just a couple of runs required now. UMT Markhors are on the brink of a memorable victory in Rawalpindi. Yes, width on offer, fullish in length, and down on one knee. Iftkhar goes big over cover, and this is something that he can do while he's just waking up. This comes so naturally to him, and in fact he's disturbed the stallion side, having a stretch. Once again, looking to just place it between point and third, but will get a run off the overthrow. So only 2 required now of 9 deliveries. In fact, 1 of 8, as this single has been added to the total now. So it's a fitting end, maybe, because Saad has been the star performer of this game. 3 overs, 20 for 2, and now 22 of 14 when the pressure was on and the team really needed somebody to take the pressure off. Saad has raised his hand and he has come to the party. This is the first one of the double headers for the Super Saturday. 2 strong teams in terms of their opportunities in the One Day Cup. One is the winner, the other one
performed well. Allied Bank Stallions will be up against the one-day champions, Lake City Panthers. The two teams which are full of stars, as also they've got youthful exuberance in their playing 11. So would be interesting that how they are going to feature. This will become a day-night game with the scheduled time of 3:30 for that to begin. And this is the way to finish it in style. Saad, the Rawalpindi boy, has brought them home. UMT Markhors has won the curtain raiser of Barrier Town Champions Cup with 4 wickets and an over to spare. They performed remarkably well, and congratulations to UMT Markhors. Yes, in the end it looked pretty easy, courtesy this partnership between Iftikhar and Saad. They really played well, and they capitalized on anything which was loose, and Iftikhar being sensible, staying out there, which was important for his team, that the captain stayed there till the end, and Saad came in, and then he blasted away with a couple of sixes, over covers, and then this fitting end to finish it with a boundary over the head of the bowler, straight down the ground. A great stroke that, and a great day for the youngsters. Just have a look at this stroke that finished the game over the bowler's head. And the things to like about this guy may be too many, but in this stroke, the stability and the balance that he has maintained while executing that is something that hasn't been on display by either of the teams. And this is something all the batters should possess. And Imam, after a good fight, decent captaincy, wasn't able to win the game for his side, but he did a decent job in the end. And UMT Markhors win by 4 wickets. And these are the highlights. And earlier on, no feet from Nafe as he had to leave. Then Fakhar Zaman used lots of feet almost every time he wanted to go big. He was dancing down the track and trying to hit the short one straight over mid-off. So many batters tried this today. None of them succeeded. And this was a great stroke. Off the back foot, over covers, good timing. And then Samad came in. He stroked one through point. And then Fakhar again trying to pull one on the charge. He failed to do so, was taken by Faisal. A good catch this time. And another leg before, a foolish delivery. Straight a one missed by Samad. And then Nawaz came in, splashed a few boundaries, looked good. And then smashed one straight into the point's hand. And he had to go. And then Iftikhar went big. In fact, he went huge for a 6. And then down the ground for a boundary. He kept stroking, he kept going after the spinner. And another leg before this for Salman this time. Once again, he was among the wickets. And then came in Saad, and he really played like a champion, stroking 2 sixes over cover, looked very stable, and he helped Iftikhar and his side get over the line, and winning by 4 wickets.
Hello and welcome to the post-match presentation ceremony of this opening game of Barrier Town Champions Cup T20 2024. And we saw UMT Markhors starting their campaign on a winning note. Today, in the presentation party, I've got Mr. Arslan Ash, Director Sales at Barrier Town. Welcome along. Thank you for your time, sir. Starting off with the man of the match for his all-round performance of 26 not out and 2 for with the ball, it's Saad Masood. He'll collect a check of 25,000 rupees and the trophy from Mr. Arslan Ash. थोड़ी बात करेंगे साथ. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया. अर्ली डेज हैं आपके करियर के, इतनी बड़ी स्टेज पे इतनी परफॉर्मेंस कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑलमाइटी. उसके बाद कॉन्फिडेंट था. मैनेजमेंट ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि मैं ऑलराउंडर परफॉर्म कर सकता हूँ, अच्छा एक टीम को जिता सकता हूँ. तो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी. कंडीशंस के बारे में बताएं. फास्ट बॉलर्स ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और पिच में बाउंस भी उनको मिल रहा था. एज अ रिस्ट स्पिनर आपने कैसा पाया कंडीशंस को? जी डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अच्छे एरियाज़ को हिट किया है. स्पिनर्स के लिए इतना ईजी नहीं था. फैसल भी वहाँ से बॉल कर रहा था तो उसको भी मुश्किल हो रही थी, बट थोड़ा सा ग्रिप हो रहा था बॉल. और बैटिंग के लिए कंडीशन मुश्किल थी थोड़ी सी. और नर्वी चेज हो गया था आखिर में. एक्सपीरियंस इफ्तिखार स्किपर आपके साथ थे, क्या बातचीत हो रही थी? जी बस उन्होंने यही कहा कि कॉन्फिडेंट रहो, अपने शॉट्स पे रहो, तो इंशाल्लाह हो जाएगा. चलें, आप आज बहुत अच्छा खेले. आगे टूर्नामेंट काफ़ी पड़ा है. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू. We'll have a little chat with the losing captain, Imamul Haq of Nurpur Lions. इमाम, क्या ऐसा लगा रन्स कम थे बोर्ड पे? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा कि जो है रन्स ठीक थे, क्योंकि जो विकेट था थोड़ा सा ट्रिकी था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा मैच अच्छा हुआ. उनको क्रेडिट देना चाहिए. एंड पे थी और 7 लड़के ने काफ़ी इंप्रेस किया, काफ़ी अच्छी बैटिंग की. और कंडीशंस जनरली ऐसी थी कि जहाँ पे आपको बैटिंग में शायद कुछ सेलेक्टिव होना था, या दोनों टीम के बैटर्स ने स्ट्रगल किया. कंडीशंस के बारे में बताइए. देखें, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 200-210 की. तो ऑब्वियसली ये एज अ बैट्समैन जो है अंदर जाके बिल्कुल कंडीशंस डिफरेंट थी. तो उस वजह से मेरे ख्याल से अगले मैचेस में बैट्समैन को ज़रा थोड़ा सा कन्वेंशनल शॉट्स पे भी, ज़रा टेक्निकल शॉट्स पे भी ज़रा मेरे ख्याल से जो है आपको, क्योंकि 11 बजे वाले मैचेस में मुझे ऐसा लगता है मोर एंड लेस यही विकेट्स, तरह के ही विकेट्स होंगे, क्योंकि विंटर है. तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़नी. और जो प्लान वो बिल्कुल क्लियर नज़र आया कि आप हार्ड ही गए पूरे 20 ओवर्स. कोई भी बैट्समैन ऐसे नहीं आया जो लगा कि वो होल्ड बैक करेंगे. ये एक प्लान था? जी बिल्कुल यही एक प्लान है. मेरे ख्याल से आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि हर जगह यही सबसे ज़्यादा बात होती है. तो हमारा एक क्लियर प्लान है कि ये सिर्फ हम आउट हो जाए, लेकिन जो हमारा इंटेंट है वो यही रहेगा. हाँ, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा और उसमें जो है, लेकिन हमारा एक क्लियर प्लान था कि जी हमने जो है चार्ज करना है थ्रू आउट द 20 ओवर्स. एग्रेसिव इंटेंट की वाली अप्रोच काफ़ी रिफ्रेशिंग लगी. तो इंशाल्लाह रिजल्ट आगे भी आएंगे. थैंक यू. Thank you, sir. Best of luck for the rest of the tournament. Thank you, sir. Thank you. That was Imamul Haq, and now we'll have a little chat with Iftikhar Ahmed. कप्तान, आपको मुबारक हो. पहला मैच आप जीत गए. थैंक यू सो मच. और कंडीशंस पहले टॉस पे आपसे बात हो रही थी. बॉलर्स ने अच्छा एक्सिक्यूट किया. थोड़ा सा कंसर्न एक्स्ट्रास को लेके होंगे? बिल्कुल ज़बरदस्त बॉलिंग की है. जिस तरह आकिफ ने बॉलिंग की है, आके उसने हार्ड लेंथ पे बॉल मारा, और दूसरी उसने जो साद मसूद ने बॉलिंग की है, वन ऑफ द बेस्ट. मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त किया हमारे बॉलर ने. और आकिफ को अच्छा लगा बैक इन एक्शन देख के, क्योंकि फैसलाबाद में जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे, अनफॉर्चुनेट थे कि इंजरी हो गई. आज अच्छा लगा उन्हें देख के? मेरे ख्याल में आकिफ जो है ये प्रोडक्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और वो अपने आप को शो कर रहा है कि मैं हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रोडक्ट. तो मेरे ख्याल में ऐसे प्लेयर को बनाना चाहिए. और ख़ुद आपका एक्सपीरियंस आखिर में काम आया. यंग साद के साथ बहुत अच्छा खेले आप खुद भी. बिल्कुल, हमारा बस यही हमेशा फिनिशिंग एक रोल होता है, और कोशिश करते हैं कि अपने रोल को सही तरह निभाए. चलिए, आज आप बहुत अच्छा खेले, आपकी टीम भी अच्छा खेली. बाकी टूर्नामेंट के लिए भी ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. That was Iftikhar Ahmed, and that was all from the presentation here. And I think it's just about time for us to take a short break. But before that, the next game coming your way is Lake City Panthers versus Allied Bank Stallions. We'll take a short break and we'll be back with the toss for that match.
पॉइंट पे एक फील्डर के लिए मौका, और इस बार मौका नहीं गवाया उन्होंने. This is in the air and taken. This time he goes, swats it. A shot. Sansanikez. और यहाँ विकेट. Got the fast bowler and they got the prize. The was played in the air. Once again, goes big over cover. But this is huge.